Very good evening, my super lovely audience. I hope all of you are good and preparation is on track for SEBI Grade A examination. First of all, give me a heads up in the chat box. Give me a thumbs up in the chat box if you are able to hear me clearly. Anshu, I am good. I am doing fine, and I hope the same for you. I hope all of you are prepared for this super marathon session that we are going to have. We are going to discuss 100 MCQs. And if you follow these 100 MCQs thoroughly, if you are serious about these 100 MCQs, your accounting is going to be prepared. It is going to be done for the upcoming examination. I want you guys to show seriousness today. Sonia, Anupama, it's really good to see you all today. Yes, Lokesh has also joined and I can see the thumbs up in the chat box. So it signifies it's the time to start this session. Okay, it's good to go. So guys, as you all know, we are having this 100 MCQ series today for commerce and accountancy. This last minute series we are going to share with you today. And if you have not subscribed to our YouTube channel, do subscribe to it and do join our Telegram channel for regular updates and PDF of this particular session. And there is a small announcement for you guys. We were having this contest in which we were to announce some winners, and so the list of the winners is here on the screen, and the team is already going to contact you. If the team has not yet reached you, you can reach the team. You have all the contact details here. Okay, so now let's start with the very first question. Let's quickly start with the first question, and I hope to see some very good answers today. I hope all of you are completely prepared for this examination. First question: in measurement, what type of transactions are considered? So we are talking about process of accounting, measurement of transactions. Which transactions are going to be measured? Quantitative, qualitative, both, or accountant is going to decide, or none of the above? Expecting some super cool intelligent answers today. Yesterday the class did not take place. Yeah. So don't worry about it. Just focus on this particular session. I'm getting the answers as option number A from Jayashri, Sonia, Lokesh, Vinith. Everyone is saying option number A except one person who is saying option number B. So I don't know why you are trying to include qualitative information in the books of accounts. You know, I would be like really amazed if this person becomes accountant. If a beautiful lady comes to your shop, you are going to write this in the books of accounts. Are you going to write it in the books of accounts? Are you going to rate the beauty of that particular lady? Perhaps that lady is going to kill you. Okay, so you don't have to do that. Only quantitative transactions are recorded in the books of accounts. If you have purchased goods worth rupees 10,000, you have paid salary worth rupees 50,000, you are going to record those. You are not going to record beauty of a lady. You are not going to record honesty of an employee in the books of accounts. So be careful about it. Don't get killed by some random lady on this, okay? So next question. Yeah, so next question: accounting starts with dash financial transactions and ends with dash accounting information. Very basic definition of accounting. So let's see if you know this basic accounting definition. If you don't know this, then you would know about it from this question. I'm getting the answer as option number A. You would like directly jump on to recording it, or first you would identify it? Yes, now I'm getting the right answers from Nilesh, Jayashri. The people who are saying option number D, I am with those only. So first you have to identify the financial transactions. Okay, you have to identify which is the financial transaction. So you are not going to record the beauty of a lady, but you are going to record the salary paid. You have to identify which transactions are to be recorded, and then you have to measure what is the amount. Then you have to measure the amount, and then ultimately you will have to make your financial statements based on that particular amount, and ultimately you are going to communicate this accounting information to the end users. So the answer is going to be option number D. Answer is option number D. Next question: bookkeeping is. Have you heard about this term, bookkeeping? You know, we compare these terms, bookkeeping and accountancy. Are you aware about it? Is it narrower than accounting or it is broader than accounting? We are going to communicate it with it.
Okay, Mansi, don't worry about it. So all of you guys are right. It is a narrower concept than accounting. Bookkeeping is mainly concerned with identifying and recording the transactions in the books of accounts. But in accounting, we are basically concerned with summarizing those transactions, preparing the balance sheet, profit and loss account, giving the useful information to the interested users. So bookkeeping is narrow. It is mainly concerned with recording the transaction in the books of accounts, and then we have to provide the useful information to the users in some useful format. This is what the accounting is going to do. So it is narrow, accounting is wide. So that's why answer was option number B. So now let's come to the next question, because we have to maintain the speed. Otherwise, Mansi is going to be like really, Mansi is going to be really disturbed. We have to maintain speed. Okay. So maintain speed, guys. Yes, Nisha, accounting starts when bookkeeping ends. Which of the following is not the objective of accounting? अब accounting का कौन सा objective नहीं है? फटाफट से बताओ. Accounting का कौन सा objective नहीं है? आपको transactions record करनी है. This is right. आपको फाइनेंशियल पोजीशन असर्टेन करना है, आपको यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना है. दिस इज राइट. बट विंडो ड्रेसिंग नहीं करना. जयश्री, महक, शिवांगी, ऑल ऑफ यू आर राइट कि विंडो ड्रेसिंग नहीं करना. विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आप अकाउंटिंग की क्या कर देते हो, मेकअप कर देते हो. आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो दैट दे आर ऑल गुड, बट इनसाइड दे मे नॉट बी गुड. For example, if your sales are very less, you are going to put in a huge amount of sales bill at the end of the year, and in the next year you are going to reverse that particular entry. You are going to pass a sales return entry. Okay, so that is not allowed. That is not the objective of accounting. So that's why the answer was option number C. Next question is, which of these is not a limitation of accounting? Accounting के अंदर कुछ खामियां हैं. हम सभी में कुछ खामियां, कुछ कमियां होती हैं, और accounting के अंदर भी कुछ कमियां हैं. Which is not a limitation of accounting? Which is not a limitation of accounting? हाँ, विंडो ड्रेसिंग को याद रखना. ये विडो ड्रेसिंग नहीं है. विडो की कोई ड्रेसिंग नहीं करने वाले. दिस इज विंडो ड्रेसिंग. अकाउंटिंग एक विंडो है और उस विंडो की हम ड्रेसिंग करने वाले हैं. सो दिस इज व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग. या मैनिपुलेशन, यू कैन से दैट. Absolutely right. Shivangi, Anupama, Mehak, Paras, all of you are saying answer should be option number B. This is absolutely correct. Accounting historical nature होती है. This is limitation. Accounting personal bias पे depend होती है, क्योंकि accountant decide करते हैं कि कौन सा method adopt करना है. तो बहुत सी चीजें होती हैं. Window dressing से भी affected होती है, but it does not ignore quantitative. It rather ignores qualitative elements. ठीक है, beauty को ignore कर रहे हैं, quantity को नहीं कर रहे हैं. So that's why the answer is going to be option number B. Quickly moving on to the next question. Which of the following statements is not true? The not word, this not word is very important. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ट्रू नहीं है? I want answers from all of you. You know, even if you make a mistake today, you won't make this mistake again in the examination. So I want you to make mistakes today. Yes, Pranjali, right. This is the spirit that I was looking for. We have three terms here: bookkeeping, accounting, and accountancy. I'm getting the answer as option number D, but there is some slight confusion, I think, between option B and D. Most of you are saying option number D, and this option number D is perfectly fine. So we have three terms here. Bookkeeping we know is narrow, accounting is broader, and if I talk about accountancy, this is very much broader. Accountancy is the entire body of the theory and practice of accounting. It is the systematic knowledge of accounting. So this is going to be very vast. It is going to tell you how you have to do accounting. So that's why accountancy is much broader in scope than bookkeeping and accounting. So that's why answer is option number D. Moving on to the next question. Now let's see if you can answer this one correctly. Dash is the process of grouping the transactions of one nature at one place in a separate account. So we have to make sure accounting information is properly recorded in a systematic fashion. You know, the first step in accounting is to just record the transactions in a chronological manner as and when they are happening. But these transactions are ultimately taken to ledger. They are classified and they are put into ledger. Right, Pranjali? एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए, वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड फॉर देम. डोंट वरी अबाउट इट. ओके,
I'm getting the answer as option number B from majority of you. Yes, this is referred to as classifying. We are going to make ledger account and this is referred to as classifying. So if you have entered into any transaction, suppose we entered into one transaction with Neeraj. So this transaction is going to be first recorded in my journal and then I am going to take this transaction to the account of Neeraj. This account of Neeraj is basically a ledger account and this process is referred to as classifying. Okay, so now let's move to the next one. Which of the following statements is correct? So you have to identify which is correct. कौन सा सही है? फटाफट से आंसर्स दीजिए. I want you guys to be super quick today because examination में you won't get much time and there would be this additional stress, additional nervousness of the examination as well. क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर्स मेरे पास. देखते हैं कौन सबसे पहले देने वाला है. Public is not a user of accounting. This is wrong. Public is a user of accounting. Investors, they are an external user of accounting. So this is also going to be wrong. Suppliers of goods and services. Suppliers of goods and services, they are short-term creditors. Okay, so this is also wrong. And you guys have rightly pointed out, all of you are right here, कि यहाँ पे accounting की जो information होती है, it ignores the effect of the changes in the price level. You know, I bought this land in 1999 worth rupees 1 lakh. Now the value of this land is 1 crore. But my books of accounts says the value of the land is 1 lakh. Books of accounts are not concerned with the changes in price level. They are based on this cost concept, historical cost concept. So this becomes one of the limitations of accounting. Okay. So now let's move to the next question. I hope अब clear हो गया है विनीत. Next question is, information provided by accounting should be factual and verifiable, free from error and bias. It should be such that users can depend on it. तो कौन सा qualitative characteristic of accounting आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है? Accounting information भरोसेमंद होनी चाहिए. आप जो इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके पीछे प्रॉपर वाउचर होना चाहिए. Vineet, we'll discuss it at the end. Okay, don't worry about it. Let's discuss this question. If it's still not clear, we'll discuss it at the end. Don't worry about it. Okay, I'm going to resolve all your doubts. Don't worry, even if it takes much more time. ऑप्शन नंबर बी के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है. रिलायबिलिटी का मतलब ही होता है भरोसे वाला. तो अकाउंटिंग भरोसे वाली होनी चाहिए. उसके अंदर अगर बहुत से एरर्स होंगे या फिर ऐसे ही कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया बिना कोई एविडेंस के, बिना कोई वाउचर के, बिना कोई बिल के, दिस इज गोइंग टू बी ट्रबलसम. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these is not a part of current liabilities? You know what are current liabilities? जिनको हाथ लगाते करंट लगता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. बट ये वो लायबिलिटीज हैं जिनको अगर आप पैसे जल्द से जल्द नहीं चुकाएंगे वो आपको करंट लगाने वाली हैं. वो आपको करंट लगाने वाली हैं क्योंकि इनको पैसे बहुत जल्दी चुकाने पड़ते हैं. इनमें से कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है? Absolutely correct. Debentures is not a current liability. Debentures is a long-term liability. If you are issuing debentures, you are going to issue for a long term. You are maybe going to issue them for 5-10 years. Okay, so there is going to be a long period. So that's why this is not a current liability. It is a non-current liability. So answer is option number C. Fatafat say, let's come to the next question. Right, Gaurav? Yes. All of you are right. Now let's come to the next question and let's see the same Josh in this question as well. According to consistency concept, which of the following statements is correct? Consistency concept, हमें consistent रहना चाहिए. To be consistent is really what is demanded from accounting as well. So what it means? It means that accounting principles or methods should remain same from year to year, but can we change those accounting methods? Can we change those in some circumstances? I'm seeing some answers as B and some as D. The people who are saying D can pat on their back. They are absolutely correct. Though we have to follow the same method from year to year, but let's suppose there is a change in law. Let's suppose our business changes. Okay, let's suppose there is a change in law and now law says to follow a different method. Then we would have to follow that particular method. So we may have to change our accounting method according to the changed circumstances of the business or of the economy.
ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि कंसिस्टेंसी लकीर की फकीर नहीं बनना अपने को, ठीक है, अपने को प्रैक्टिकल बनना है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. अगर चेंज डिजायर्ड है, इट इज यूजफुल फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव, देन वी आर गोइंग टू मेक दैट चेंज. ओके, yes, we can change in special circumstances. Now let's come to the next question. Which of the following events are based on the accounting concept of going concern? Going concern का मतलब जानते हैं ना, लोग आएंगे, लोग चले जाएंगे, बट हमारी जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, वो तो चलती ही जाएगी, है ना जी. टाटा, बिरला, बजाज, फाउंडर्स चले गए, बट कंपनीज अभी भी चल रही हैं. कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, राइट. जीएसटी आ गया तो चेंज करना पड़ा, लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ा, राइट. ओके, बताइए जी, तो गोइंग कंसर्न के अकॉर्डिंग कौन सी इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करने वाले? आउटसाइड पार्टीज हमारे डिबेंचर शेयर खरीदती हैं क्योंकि हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में चलने वाला है. ऑल ऑफ यू आर राइट, यू आर सेइंग आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. और साथ ही हम क्लासिफिकेशन करंट और फिक्स्ड एसेट्स की भी इसीलिए करते हैं बिकॉज द बिजनेस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन द लॉन्ग रन. And even the prepaid expenses, the expenses which we have paid but we are going to get benefit in the future, so we are going to run in the future, we are going to keep working in the future, so this is also based on the going concern concept. Next question, let's keep this josh in this question as well. According to business entity principle, business is treated as a unit separate and distinct from its. business अलग है और business चलाने वाला अलग है. I was talking about जेठालाल गड़ा, you know, तारक मेहता का उल्टा चश्मा. तो वहां पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अलग है और जेठालाल गड़ा अलग है. So this is the business entity principle. Both are separate. A business is separate from its owners, promoters and shareholders. So you guys are absolutely right for this one. Answer is option number D, all of the above. Quickly moving on to the next question. Accrual concept is based on. Accrual concept. Keep up the momentum, guys. I want to see these kinds of answers in this question as well. You know, the chat box is running. This is what I want to see. Even if you are making a mistake, just make it, but you won't repeat it in the examination. Accrual concept. What this concept says? This concept says even if you have not paid for any expense, but still if you have incurred it, you should record it in the books of accounts. You have made some sales, but you have not received the amount on it, but still you should record it in the books of accounts. So this is based on your matching principle. You have to match your expenses and revenue. So you have incurred some expense but not paid for it, still record it. You have made some revenue, not received money, still record it. This is based on the matching concept. All of you are absolutely right. All of these answers are perfectly fine. Answer is going to be option number A, matching principle. No, not dual aspect. This is going to be based on matching principle. Chaliye, fatafat se let's come to the 15th question. From the given options, identify which of the following cannot be considered a fundamental accounting assumption. You know about fundamental accounting assumption? ये वो assumption है जो कि हमेशा माना जाता है follow होंगी ही होंगी. अगर आप इनके बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं, if you are not talking about these in the financial statements, it means they are being followed. But if you are not following any of these, you have to specifically give a note in the financial statements. We have to answer as per the options ना. Answers को options के according दीजिए ना. Revenue recognition तो यहाँ पे है ही नहीं था. Answers आ रहे हैं A और D के. अरे mixed answers क्यों दे रहे हो आप सभी? फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हमारे पास 3 है. देखो याद कर लो इन तीनों को. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल. गोइंग कंसर्न बिजनेस चलता जाएगा, हमें कंसिस्टेंट रहना है. अक्रूवल अभी आपको बताया. दीज आर द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions as per the accounting standard 1. Okay, so you have to learn these. You have to learn these. Conservatism is not a fundamental accounting assumption. It may be accounting principle, accounting concept, but it is not a fundamental accounting assumption. This is what you guys have to remember. So answer is option number A. Next question. Okay, Vineet. I hope now the doubt is resolved. This question says contingent liabilities को balance sheet में दिखाते हैं as per which accounting principle? कौन सा accounting principle इसके पीछे छुपा हुआ है? Contingent liabilities का मतलब है सब कुछ दिखा दो, कुछ भी छुपाना नहीं है. You don't have to hide anything. Contingent liability, it means कि liability अभी presently बनी नहीं है, but it may become a liability in the future.
Maybe there is a court case which is going on, some business, but it has to disclose it in the balance sheet. In a footnote, it has to say it is a contingent liability. It depends on circumstances. ऑप्शंस आपके आंसर्स जो आ रहे हैं बी के मेजॉरिटी दे रहे हो, और मेजॉरिटी इज ऑलवेज राइट. प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सब कुछ दिखा दो, कुछ भी छुपाना नहीं है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऐसे ही अपनी स्पीड मेंटेन रखिए, इसी स्पीड में इसी फ्लो में आंसर्स देते रहिए. Which of the following accounting adjustments bears direct relation to the principle of prudence? So we have to be prudent. You know, जब आप बहुत खर्चा करते हो, मे बी आपके घर वाले कहते होंगे, okay, be prudent, okay, be conservative, save for the future. There may be losses in the future. Make a provision for the losses which can occur in the future. Okay, so principle of prudence is basically the conservatism concept. Yeah, this is in the name. Right. There is only a slight difference. Okay, just answer this one and let me quickly connect my laptop to the charger. Okay, so I'm back and I hope I see correct answers here. I see correct answers here. I'm getting the answers as option number D from majority of you. Is the D option correct? Is the D option correct? No, D is not correct. Principle of prudence. Prudence का क्या मतलब है कि जो आपके फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, फ्यूचर में एक्सपेंसेस होने वाले हैं, जस्ट प्रोवाइड फॉर देम नाउ. So if you are expecting some bad debts that can happen in the future, just make a provision for bad debts now only. Okay, outstanding expenses आप account for क्यों करते हैं? This is because of the accrual concept. Okay, this is because of the matching concept. Depreciation fixed assets पे क्यों charge करते हैं? This is because of the matching concept. Okay, so answer is option number B. Answer is option number B. I have explained it. Payal, if it's still not clear, we'll take up the queries at the end. Don't worry about it. Okay, I'll resolve all the queries. Next question. Junior accountant in a big MNC decided to omit the paisa in certain figures and showed rounded off figures. Senior accountant agreed with him because of, right शुभम, सी इज मैचिंग कंसेप्ट. डेप्रीसिएशन क्यों लगाते हैं? बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, क्योंकि हमने इस साल में जो एसेट यूज किया उसका एक्सपेंस, दिस बेसिकली द डेप्रीसिएशन. Sonia is the first one to give the correct answer. And now everyone is saying option number C. Yes, this is because of the materiality principle. Principle of full disclosure says सब कुछ दिखाओ, but materiality says जो immaterial चीजें हैं उनको मत दिखाओ. आप पैसा को skip कर सकते हो, करोड़ों में आइटम्स हैं, करोड़ों की वैल्यू है, so पैसा can be omitted. Okay, so this is because of the materiality principle. We can club the different items of the stationery in one single stationery heading, again because of the materiality principle. The very popular double entry system is based on which accounting principle? चलिए बताइए guys, डबल एंट्री सिस्टम जो है कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है? डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है कि जो भी आपकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी आप उसको दो जगह पे एंटर करने वाले हैं, कम से कम दो जगह पे एंटर करने वाले हैं. सो कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड है? एब्सोल्युटली राइट नीलेश, शुभम, ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं. दिस इज परफेक्टली राइट आंसर. दिस इज बिकॉज ऑफ द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे. अगर हमने गुड्स बेचे पायल को, तो यहां पे हमने क्या किया? एक तो सेल करी गुड्स की और एक हमने पायल के साथ ट्रांजैक्शन करी. तो हर एक के दो पहलू होने वाले हैं हर एक ट्रांजैक्शन के. दिस इज योर डबल एंट्री सिस्टम एंड दिस इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल. यू ऑलरेडी नो द बैलेंस शीट इक्वेशन ना. चलो जी, मैच द फॉलोइंग करके बताइए. मैच द फॉलोइंग करके फटाफट से बता दो. लेट्स सी किसको सबसे ज्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद हैं और कौन भूला पड़ा है. भूल गए हो तो मैं याद करवा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट. These are the most important accounting standards. If you do not know these accounting standards, then you are doomed. If you are answering this wrong, then perhaps you have to like go through these once more. I'm getting the answer as option number C from Shivam and Vidula. Vinay is saying option number C.
सो कैश फ्लो स्टेटमेंट किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग. प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज AS10, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज AS2, अकाउंटिंग सॉरी AS3 ये वाला था हमारा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इज AS13. सो क्या मैचिंग बनी हमारी? हमारी मैचिंग बनी जी ऑप्शन नंबर बी वाली. बी वाली बनी ना? अरे सी वाले कहां से आंसर दे रहे थे मुझे? सी वाले कौन है बताओ फटाफट से, कि मैं ऊपर चैट करके देखूं सी वालों को पकड़ूं. अब फटाफट से आंसर बी आने लग गए. बताइए, सर को गुमराह करने वाले बच्चे भी बैठे हैं यहां पे. ऐसी गंदी हरकतें मत कीजिए. चलिए मजाक कर रहा हूं. आई होप अब आपको पता चल गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्ट मैचिंग यहां पे किन किन ऑप्शंस में हो रखी है वो आपको बताना है. करेक्ट मैचिंग आपको बतानी है किसकी हुई है. क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट किताबों में नहीं लिखते. वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है उसका मेथड हम फुटनोट्स में लिखते हैं. बैड डेट्स के लिए प्रोविजन पहले ही बना लेते हैं. हमारा कोई लॉ सूट पेंडिंग है उसकी प्रोविजन बना लेते हैं. हाँ बी वाले हैं हम तो बहुत बढ़िया है. इस सवाल में कौन से वाले हैं आप? हाँ डी के आंसर आने शुरू हो गए फटाफट से. शुभम, नीलेश, विनायक सभी कह रहे हैं जी ऑप्शन नंबर डी आंसर होना चाहिए. बिल्कुल जी, आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए. क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट रिकॉर्ड नहीं करते. दिस इज बिकॉज ऑफ द मनी मेजरमेंट. मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक जो है उसे लिखते हैं बिकॉज ऑफ द फुल डिस्क्लोजर. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कंसिस्टेंट रहनी चाहिए बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट. प्रोविजन बना लेते हैं क्योंकि हम कंजर्वेटिव हैं, हम प्रूडेंट हैं. सो दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Yes, so now let's come to the next question. During the periods of inflation, the figure of net profit as depicted by profit and loss account may not be accurate because of. So let's see if you can answer this one. This one is a real test for you guys. इसको आंसर कर पाते हैं कि नहीं कर पाते? ओके ओके, डी वाले सवाल ले जाएंगे. डी वाले से भी ग्रेड ए ले जाएंगे. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है. ठीक है जी, चलो आंसर दो फटाफट से. इन्फ्लेशन के दौरान हमारी प्रॉफिट की फिगर सही नहीं आएगी. क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर किसका बोलबाला है? हाँ बिल्कुल सही, हिस्टोरिकल कॉस्ट का बोलबाला है. सब चीजें आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखोगे और आज की डेट में प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड. You are writing the expenses at the historical cost and now you are booking the revenue at the current prices. So this basically means the figure of profit is going to be inflated. This is because of this historical cost principle. Absolutely correct. Super duper intelligent audience I have today. Very good to connect with you guys. चलो जी, अब बताइए, ये ट्रांजैक्शन दी है कैश विड्रॉन बाय प्रोपराइटर. तो जेठालाल गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, फिर गल्ला खोलते हैं, उसमें से पैसे निकाल लेते हैं और घर ले जाते हैं. घर ले जाते हैं टप्पू के लिए वीडियो गेम लेके जाने के लिए. अब बताइए नट्टू काका क्या बोलेंगे? एसेट्स गिरे, लायबिलिटीज गिरी या क्या गिरा? क्या गिरा बताइए. ओके लक्ष्मी, वी आर गोइंग टू यूज बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, डोंट वरी अबाउट इट. I'm getting the answer as option number B, which is perfectly fine. If the cash is withdrawn by the proprietor, the money that is invested by the proprietor in the business, it is referred to as capital. So this means the capital of the proprietor is going to decline and cash is an asset which is going to decline. So answer is going to be option number B. Yes, all of you are saying option number B, which is perfectly fine. Now I want you guys to answer this one correctly. Warm up question था, अब आपका real test है. वो warm up question था, वो सबका सही है. इसका सही आंसर दो तो मानूंगा आपकी तैयारी है. Which of the following correctly depicts the effect on accounting equation for outstanding expenses? Outstanding expenses, सर वो expenses जो अभी बाहर खड़े हैं, ऐसे खर्चे जिनको हमने अभी चुकाया नहीं है. लोगों को अभी पैसे देने हैं बट अभी चुकाए नहीं है, बाहर खड़े हैं, आउटस्टैंडिंग है. They are standing outside. You are most welcome Lakshmi. Then also it's drawings. Harish, profit is ultimately added to capital. So if capital is withdrawn, it is drawings. I'm getting the answer as option number C. Let's see if option number C is correct. This is perfectly fine. You guys are super intelligent. So why option C is going to be the answer? So we have outstanding expenses here. It means we have some expenses. We have not paid for them. Suppose salary is outstanding. Salary of rupees 10,000 is outstanding. So salary is basically my expense.
Okay, salary is basically my expense and outstanding salary is basically what? It is basically my liability. Okay, so my liability is going to increase, and my expense is going to increase. Okay, so this expense is ultimately going to be reduced from my profits, and profits ultimately form part of the capital of the owner. Okay, so this is what I was telling you, Harish. Okay, so that's why what is going to happen, your capital is going to decrease because of this increase in expense, and your liability is going to increase because of this outstanding salary, because of this obligation that you have got. Chaliye ji. Okay, now let's come to the next one. Goods costing 40,000 sold at a profit of 20% for a cash. Examine the effect on accounting equation. Accounting equation we all know, right? Assets is equal to liabilities plus cash. All of you have become pro now. All of you have become pro. This is the accounting equation. And if you have sold some goods at a profit, what are goods? Goods are basically your stock. Stock is being sold in cash, but there is also some profit involved. Stock is 40,000 and the cash we are getting is going to be 48,000 because 20% is the profit. Okay, so stock is decreasing, cash is increasing, and this 8,000 ultimately is the profit, which is going to be part of the capital. And so that's why the answer should be option number C, and you guys are answering it correctly except few people. I want you guys to also understand the concept behind it. Okay, just understand the concept behind it कि हमारे net assets यहाँ पे 8,000 से increase हो रहे हैं. Stock is decreasing by 40,000, cash by 40, increasing by 48,000. So net increase in assets is 8,000. Okay, and there is a profit of 8,000 which is ultimately going to the owner. So capital is going to increase. Quickly coming on to the next question. एक firm है XYZ and company. It made a credit sales in January of 10,000 and 31st March तक it only received 7,000. 3,000 is still pending. How much revenue is to be recognized? Let's understand कि किसको accrual concept, किसको revenue recognition, ये सब समझ में आया. Let's see कि कौन तुक्के मार रहा है यहाँ पे. Right, Vashisht. Quickly coming on to question number 25. I see people are retracting their answers. You know, even if you have put the wrong answer, just keep it there, na? Why wasting time in retracting it? I'm getting the answer is option number C. Rishabh, Sonia, Nikhil, all of you are saying option C should be the answer, which is perfectly right. 10,000 ki sale ho gayi, even if you have not got the money, but we are following this accrual concept. Okay, so that's why the answer is going to be option number C. Perfectly fine. It means you are understanding the previous questions. Chalo ji. Question number 26. Fatafat se. When the number of accounts to be debited or credited is more than one, entry made for recording the transaction is called dash journal entry. So you know na कि journal में जो entry करते हैं, है ना, journal के अंदर entry करते हैं, it is a chronological record of all the transactions that are happening on day-to-day basis in any business. Shubham is saying option B. Sonia, Vinayak, Nilesh, all of you are saying option number B. So there can be two types of journal entries. One is single and the other one is compound. Okay, now let's suppose I got to the market and I bought two things. I bought furniture and I bought machinery. Furniture I bought 10,000 ka and machinery I bought 15,000 ka. So I can make two separate entries, furniture and machinery ki alag-alag se, and I can also make a combined entry. Furniture debit, machinery debit to cash 25,000. Okay, so if more than one account is being debited or credited, then that entry is basically a compound entry. जैसे आप साइंस में compound पढ़ते थे ना, ऐसे ही यहाँ कॉमर्स में भी हम पढ़ते हैं compound entries, जहाँ पे आपने एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट कर दिया है. So answer is going to be option number B. चलो जी, विनायक, आपका नाम आ गया इस क्वेश्चन के अंदर. If goods of rupees 20,000 are purchased on credit from Vinayak, so Vinayak has to answer this one. विनायक, अब तो इज्जत पे बात आ गई है. Goods purchased on credit from Vinayak. I hope you know the basic accounting rules of debit and credit. Basic accounting rules आप सबको पता है ना? आपने विनायक से सामान खरीदा, विनायक से क्रेडिट पे सामान खरीदा. This is basically going to be your liability. Your goods are basically what? Your asset. So your assets are increasing. Increase in asset is debited. Your liability is increasing. Increase in liability is credited. I'm getting the answer is option number A. Option number A is perfectly right.
your asset is increasing, your stock is increasing, and the stock is referred to as purchases. Purchases account debit 20,000. Vinayak account is going to be credited. It is a liability with rupees 20,000. अरे पोस्टपोन पे कहां पहुंच गए, सवालों को सॉल्व करो ना, ये बातें चलती रहेंगी, एग्जाम पे फोकस कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, आशीष प्रोप्राइटर विथड्रू 50,000 फ्रॉम द बैंक फॉर प्राइवेट यूज. Which account will be debited while passing the journal entry? बताइए. We have already discussed this in the previous question as well. हाँ शुभम, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, डेबिट रिसीवर क्रेडिट गिवर, अपना अपना तरीका है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर. सो यहां पे क्या हो गया, आशीष की जगह जेठालाल भी विड्रॉ करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था. सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी अ ड्रॉइंग. सो यहां पे हमारी क्या हो गई, ड्रॉइंग हो गई. ड्रॉइंग हो गई है यहां पे. सो वी आर गोइंग टू डेबिट ड्रॉइंग्स. सो ड्रॉइंग्स इज गोइंग टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड, वी आर गोइंग टू क्रेडिट द बैंक अकाउंट. सो बैंक इज गोइंग टू बी credited. So this is how the entry would be made. Okay, चलिए जी. Now again another question based on the concept of debit and credit. I'm going to make sure कि आपको debit credit अच्छे से समझ में आ जाए. Payment of wages for installation of machinery will be recorded as, you know, this question is testing more than one concept. हरीश फिलहाल इतना याद कर लीजिए, फिलहाल जस्ट रिमेंबर इट. ओके, स्कूल में मैडम से पूछते थे क्या कि 2 + 2 4 होता है, इसका कंसेप्ट बता दीजिए. तो अकाउंटिंग में प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट ही है. सो दिस रूल यू हैव टू लर्न, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ओके, आई एम गेटिंग द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इट मींस यू हैव अप्लाइड द प्रिंसिपल्स करेक्टली, बट ऋषभ एंड ओनली ऋषभ, या Paras, yeah, you have also been caught in the trap. You have been caught in the trap. If you are paying wages for installation of machinery, it has to be included in what? It has to be included in the cost of the machinery as per the cost concept, as per the accounting standard 10. Okay, so this machinery is going to be increased. Machinery is going to be debited. Asset is going to increase, debited. Cash is going to be credited. Okay, so this entry would be passed. Next question. बड़े बड़े businesses में छोटी छोटी बातें नहीं. It is not easy to record all the transactions in one journal and post them into various accounts. So for the easy and accurate recording of all the transactions, dash are maintained. Installation expenses are capitalized. Yes, Vashist. This is what the cost concept says. This is what AS10 says. Vinayak is saying option number D. Babneet is saying option number D. All of you are saying option number D. You know, even if you are answering wrong, just answer it. तो जैसे ऋषभ ने गलत आंसर किया, now he is not going to repeat the mistake. मैंने उसको नेम भी ले दिया, so now he is going to know कि सर ने मेरा नाम लिया था, मैंने गलती करी थी. Now I am going to not repeat that mistake. So do answer guys. Make sure कि आप आंसर जरूर करें. तो हम सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बुक्स मेंटेन करके चलते हैं. We maintain one cash book for cash transactions. We maintain one purchase book for purchase on credit basis, and similarly sale book for sale on credit basis. Similarly purchase return, sale return, bill receivable, bill payable, and whatever transactions are not recorded in any of these, it is recorded in the last one. This is the residuary book. This is the journal proper. So if any transaction is not recorded in any of the above 7 books, it is recorded in journal proper. Another question based on this concept. Right, Agnik. In the context of subsidiary books in accounting, which of the following is incorrectly matched? Matching कहां पे गलत हो रखी है, फटाफट से बताइए. बिल्कुल क्रेडिट पे हैं तो रिकॉर्ड करते हैं. इस क्वेश्चन को मैं आपको इस क्वेश्चन को जब एक्सप्लेन करूंगा तो पता लग जाएगा. वैसे I wanted to test you guys, but you are asking me, Lakshmi. Yeah. Okay. So yeah, the purchase book and sale book, they are only used for recording credit, purchase and sale. यानी कि उधार पे purchase और उधार पे sale किया तो आप इनको इस्तेमाल करेंगे. If you are receiving cash for the sale or purchase, then you are going to record it in the cash book. Okay, so that's why option number D is incorrectly matched. Purchase of stationery in cash, आप cash book में record करेंगे. Depreciation or building, not recorded anywhere. It is going to be recorded in journal proper. Okay. So this is how it was to be answered.
And most of you have answered it correctly, except 1 or 2 people. Right, Vinayak, it would be cash book. Chalo ji. Next question. Which is a correct difference between reserve and provision? Accounting में reserve भी होते हैं, provision भी होते हैं. Let's see if anyone knows the difference between the two. Reserves are basically the journal reserves that you are creating for any uncertainty which can happen in the future. But provision you are creating for any particular specific liability that you are expecting. So provisions are more specific in nature, reserves are more general in nature. For example, you have provision for depreciation, provision for bad debts. The banks, they are creating lots and lots of provisions for the debts that can become NPA, that can become bad. So this is how you have to understand the concept. अरे बाप रे बाप, इतने अलग अलग आंसर्स डी, बी और सी तो मेरे पास आ ही गया. डी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है क्या? करेक्ट डिफरेंस पूछ रहे, करेक्ट पूछ रहे. ओके, so you have to know what is a charge and what is a appropriation. Okay, so provision is basically a charge against profit. Whenever we are creating a provision, we are basically charging it as an expense against profit. जब भी आप अपना profit compute कर रहे हैं, you are recording your revenue and you are subtracting your expenses. Okay, and then you are going to compute your profit. So profit compute करने से पहले whatever you are mentioning, whatever reserves that you are making, they are going to be called provision. Okay, they are going to be called provision. It is a charge against profit. It is a charge against profit. You have to definitely charge it, be it any circumstance. Maybe profits are less, but you still have to charge it. But if you have sufficient profits, if the profits are large, then you are going to appropriate it. Okay, this is the meaning of appropriation. Then you are going to create the reserves. So A is not correct, A is wrong. Reserve is created for journal purposes. So again, B is wrong. And C says generally creation of reserve is at the discretion of management. Provision must be made even if there are no profits. So C is correct. So that's why C is the answer for this question. C is the answer for this question. अगर आपको नहीं पता था, just read this explanation. क्लास के बाद आप read करना, you would understand it. You would understand it. Absolutely, very brilliantly Vinayak has put it. Ki charge is basically a reduction in profit that you have to make, and appropriation is basically a distribution of profit. If you have enough profits, then you are going to make this distribution. Then you are going to apportion it. Absolutely correct. Very brilliant. Vinayak is on fire today. Which of the following is incorrect in respect of depreciation? With this question, we have reached the 33rd question. 1/3 of the session is done. And if you are enjoying this session, just give me a thumbs up in the chat box. Just give me a thumbs up in the chat box if you are learning from it, if you are enjoying from it. Depreciation, घिसारा, asset का घिसारा, it is depreciation. आप कुछ भी चीज खरीद कर लाइए, आप नई कार खरीद कर लाइए 50 लाख की, 1 साल के बाद उसकी कीमत आधी रह जाएगी. This is depreciation. Yes, do answer this question and do give me a thumbs up in the chat box as well. Gokul has given a thumbs up. Other people are just busy answering this question. It's really good to see that you guys are so much interested in all these questions, and still some of the people are really enjoying it. And if you are answering it, it shows you are enjoying this session. That's really good to see. Really good to see. Okay. So depreciation के बारे में कौन सा incorrect है? None is incorrect. It is decline in the value of the fixed assets. So fixed asset is the key word here. Machinery, furniture, all these assets, the value of these decline. Okay, it is the loss of value because you are using, because the time is passing. It is a continuous process, and depreciation is deducted before calculating the taxable profit. So if you are computing your profits को compute करने से पहले, when you are deducting the expenses, in these expenses you are also going to include your depreciation. Depreciation expenses allowed for income tax purposes. So answer is option number E. None is incorrect. Now let's move on to the next question. Yes, I can see lots of thumbs ups here. It's really good to see. Depreciation के बारे में कौन सी बात यहां पे सच है? सर आप पहले पूछते हो गलत है, आप पूछते हो सच है, एक बार ही क्यों नहीं पूछ लेते? So all of you answer this question. Depreciation current assets पे चार्ज होता है? नहीं होता. Depreciation आप चार्ज कर रहे हैं every year. So basically you are setting aside some amount every year. That amount is getting
set aside every year and you can use that amount later on for replacing that particular asset. When market value of an asset is higher than the book value, depreciation is not charged. तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो ऐसा कुछ होता है क्या? ऐसा तो कुछ होता नहीं है ना? एडिक्वेट मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड देन डेप्रिसिएशन नीड नॉट बी चार्ज्ड, ऐसा भी कुछ होता नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी ओनली. डेप्रिसिएशन इज ओनली चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉट करंट एसेट्स. करंट एसेट्स आपके 12 महीने से कम वाले जो आपको 12 महीने तक की बेनिफिट देंगे, बट आप कोई फिक्स एसेट खरीदेंगे वो आपको लंबा बेनिफिट देगा, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे. So answer is option number B. Now let's come to the next question. फटाफट से next question का आंसर दीजिए. A machine is purchased for 60,000. Machine is purchased for 60,000. And is expected to have a useful life of 10 years. At the end of the 10th year, it is expected to have a sale value of 6,000. But expenses भी होने वाले हैं disposal के 1,000 के. उसकी डेप्रीसिएबल कॉस्ट यहां पे क्या होने वाली है? डेप्रीसिएबल कॉस्ट आपको यहां पे बतानी है. बताइए डेप्रीसिएबल कॉस्ट. आपने मशीन को परचेज किया 60,000 का, ओके जी, 10 साल की यूजफुल लाइफ है. 10 साल के बाद आप उसे 6,000 का बेच देंगे, बट बेचने में 1,000 लगेगा. सो नेट यू आर गोइंग टू रिसीव 5,000 ओनली. सो कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, दिस 55,000. Absolutely correct. 55,000. Option number C. All of you are correct. Option C is going to be the answer. Now let's move on to the next question. Which of the following are the advantages of straight line method of depreciation? Straight line method of depreciation के कौन से फायदे हैं आपको बताने. दो मेथड होते हैं ना पॉपुलर. 54 वाले गलत हैं लोकेश जी, 55 आंसर है. 55,000 इज द आंसर. एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है. आपको बताए थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो. हाँ, विनायक तो फॉर्मूला भी बता रहे हैं. विनायक इज ऑल प्रिपेयर्ड, ऑल सेट फॉर द एग्जामिनेशन. स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के इनमें से कौन से फायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, ये हमें यहां पे बताने हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर क्या होता है? अगर आपने 50,000 का एसेट खरीदा था, 10 आप उसे सपोज 5 इयर्स के लिए यूज करने वाले हैं, तो हर साल में आप 10,000 डेप्रिसिएशन डालने वाले हैं. ओके, हर साल में 10,000 डाल रहे हैं. बट अगर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता और हमारा डेप्रिसिएशन का रेट, लेट्स सपोज डेप्रिसिएशन का रेट होता 20% का, ओके, तो उस केस में आप पहले साल में 10,000 लगाते. उसके बाद जो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू आती, 50 में से 10 घटा के 40,000 आया, तो अगले साल आप 8,000 लगाते. अगले साल आप 6,400 लगाते. तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगता है. ऑप्शन नंबर ई वाले जो है ना, ई वाले जो हैं वो बिल्कुल सही है. ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन. देखो जी, समझते हैं इस क्वेश्चन को. तो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल बर्डन रहते हैं डेप्रिसिएशन और रिपेयर एक्सपेंस का. तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है. डेप्रिसिएशन आपकी हर साल जो है उतनी लगती रहती है. शुरू में आपकी रिपेयर का खर्चा कम रहता है और बाद में रिपेयर का खर्चा बढ़ जाता है. तो टोटल बर्डन हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे शुरू में कम रहेगा और बाद में जो बर्डन है इट इज गोइंग टू इंक्रीज. ये बर्डन हमारा बढ़ जाएगा. इनकम टैक्स स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो नहीं करता, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. और यहां पे देखिए जी, लार्ज पोर्शन ऑफ कॉस्ट इज रिटर्न ऑफ इन अर्लियर ईयर्स. ऐसा नहीं है. वी आर राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट इन एवरी ईयर. We are writing of equal amount in every year, so this is also wrong. So none of the above. Question number 36, answer is going to be E, none of the above. All of these, they were the characteristics of written down value method. जो सारे advantages आपको यहाँ पे दिए हुए हैं वो written down value method के, not the straight line method. Yes Vinay, income tax except written down method. चलिए जी, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स, बताइए. ओके, डोंट वरी वशिष्ठ, नाउ यू हैव गॉट दिस पॉइंट, यू वोंट रिपीट द मिस्टेक. अगर आप कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज कर रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू प्रमोट योर कंपेरेबिलिटी. यस ऋषभ, बबनीत, विनायक, अनुपमा, ऑल ऑफ यू आर राइट. अगर सब लोग रुपीस के अंदर मेजर कर रहे हैं और कॉमन फॉर्मेट कुछ ऐसा सबने बना लिया है, देन दिस इज गोइंग टू मेक दी अकाउंट्स कंपेरेबल. आप इन्फोसिस के उठाएंगे, आप रिलायंस के उठाएंगे, दे आर गोइंग टू लुक सिमिलर टू यू. यू कैन इजीली कंपेयर दोज. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए.
Quickly coming on to the next question. Trading and profit and loss account is prepared under which attribute of accounting? Trading and profit and loss account. So we already know. First we identify, then we record, then we classify, then we summarize, then is analysis and interpretation. So हाँ, वंशिका कह रहे हैं ये हुए ना अच्छे क्वेश्चन। अब चलिए, बहुत बढ़िया लगा सुन के। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां पे आने वाले हैं? क्या ये आपकी समराइजिंग है? अरे बाप रे बाप, झुंड में गलत आंसर आए हैं, झुंड में। विपिन आंसर ए दे रहे हैं, आदित्य आंसर ए दे रहे हैं, बाकी झुंड में गलत आंसर आए हैं आप सबके। समराइजिंग द ट्रांजैक्शन, समराइजिंग का क्या मतलब होता है? समराइजिंग मींस यू आर प्रिपेयरिंग योर ट्रायल बैलेंस, यू आर प्रिपेयरिंग योर प्रॉफिट एंड लॉस, एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में तो हमारे एनालिसिस के टूल्स आएंगे ना, द कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, तो ये सब चीजें आएंगी एनालिसिस के अंदर। झुंड में गलत आंसर आए। सो गए सब के सब। अरे सर क्या करें, इतनी रात को तो हम सो जाया करते हैं या केवल मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पे। पढ़ाई कहां होती है इस टाइम पे, बट मजबूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा। बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। चलिए, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है जी। हाँ, बैलेंस शीट की एनालिसिस आप कर रहे हो तो नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस शीट बनाना, इज समराइजिंग। बैलेंस शीट में एक समरी ही तो आ रही है ऑल द ट्रांजैक्शंस की। अब सही आंसर आ रहे हैं सभी के, ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली राइट कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन जर्नल। सो आंसर इज परफेक्टली राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द अकाउंटिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी डेबिटेड? क्रोनोलॉजिकल, समय के जैसे, समय के साथ साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेबिट और क्रेडिट अकाउंटिंग रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग किसको डेबिट करते हैं? ऑल आर सेइंग ऑप्शन ए, अनिल, पारस, ऑल ऑफ यू आर सेइंग। अरे मजाक कर रहा था अंशु। मुझे पता है अच्छे बच्चे हैं, कोई नेटफ्लिक्स नहीं देखता, सभी क्लास देखते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड यू आर परफेक्टली राइट। तो मैंने आपको बताया था, एक याद कर लो, इंक्रीज इन एसेट को डेबिट करते हैं, इंक्रीज इन एसेट को डेबिट करते हैं, बाकी सारे आपके ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो जी, कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑलवेज शोज। बताइए आपका जो कैश है उसका कैसा बैलेंस होगा? योर कैश इज बेसिकली योर एसेट, एंड एसेट्स they have what balance? Do they have debit balance or do they have credit balance? So asset अगर आपके पास कोई आ रहा है, if you are getting some asset, then what you are going to do? You are going to debit it. Okay. So yes, Sonia, Vinayak, Gokul, Lokesh, all of you are right. It is always going to have a debit balance. So assets का debit balance होता है and liabilities का आपके पास credit balance होता है. So this is something that you have to remember, okay? Just remember this thing. चलिए, ट्रायल बैलेंस might match in spite of the presence of. कुछ गलतियां हैं जो ढकी रहती हैं, ट्रायल बैलेंस उनको पकड़ नहीं पाता है। जैसे आपकी कुछ गलतियां आपके माता पिता पकड़ लेते हैं और कुछ गलतियां पकड़ में आती नहीं है। Trial balance might match in spite of presence of some errors. Right. No, assets usually have debit balance, और कैश का पूछ रहे थे तो कैश का कभी क्रेडिट नहीं होगा, कैश का भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके ममता, चलो जी। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर है, ए और डी में कंफ्यूजन चल रहा है। आई एम गेटिंग मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज बिटवीन ए एंड डी। तो देखो, अगर आपने पूरा का पूरा छोड़ दिया, कोई ट्रांजैक्शन हुआ था आपने पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक मोबाइल खरीदा था और उस मोबाइल को पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। मोबाइल खरीदा था 10,000 का,
मोबाइल डेबिट 10,000 और मेरा कैश क्रेडिट होना था 10,000 से, पूरा का पूरा ही रिकॉर्ड नहीं किया. सो डेबिट और क्रेडिट दोनों ही मेरे 10,000 से कम हो जाएंगे. द ट्रायल बैलेंस इज स्टिल गोइंग टू मैच. दिस इज कंप्लीट ओमिशन. एरर ऑफ प्रिंसिपल. एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि मशीनरी इंस्टॉलेशन एक्सपेंस you included in the wages account, wages debit, cash credit, you did this kind of thing. Okay, now even if you have made the mistake, yahan machinery account aana chahiye tha, but still the debit and credit they have increased by, let's suppose 15,000. So again the trial balance is going to match. Okay, so both A and B is going to be the answer. अगर एरर ऑफ कमीशन है, इट मींस आपने लेजर अकाउंट में एक जगह रिकॉर्ड कर दिया, दूसरी जगह यू फॉरगॉट टू रिकॉर्ड इट, सो देन योर ट्रायल बैलेंस इज नॉट गोइंग टू मैच. So both A and B is going to be the answer. Right. Vinayak is all right. किसी चीज को आप डेबिट करते हैं, then it is going to have debit balance. किसी को क्रेडिट करते हैं, then it is going to have credit balance प्रांजलि. So increase in asset is debited, so assets are going to have debit balance ना. जितने से इंक्रीज करेंगे कल को मैक्सिमम उतने से ही डिक्रीज कर सकते हैं, या उससे कम से ही डिक्रीज करेंगे, उससे ज्यादा से डिक्रीज नहीं करेंगे. तो क्रेडिट कम ही होगा आपका, डेबिट से ज्यादा नहीं होगा, कैश का बैलेंस से ज्यादा आप पे नहीं कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकाउंटेंट ने दिल जान लगा दिया, ट्रायल बैलेंस इज स्टिल नॉट टेलिंग आफ्टर मेनी एफर्ट्स, देन व्हाट अकाउंट इज गोइंग टू बी ओपन. सो देयर इज बेसिकली व्हाट. Yes, there is basically a suspense. Shubham, Rishabh, Soni, all of you are right. There is a suspense कि पता नहीं कहां गलती हो गई है. So a suspense account is going to be opened with a difference. Suppose ट्रायल बैलेंस के डेबिट का टोटल 1 लाख आ रहा था, क्रेडिट का टोटल इट वाज कमिंग आउट टू 95,000. So now the accountant is going to record suspense account on the credit side and is going to write 5,000 as the balance. Okay, and then later on maybe in the next years he is going to rectify, he is going to close this suspense account. Okay, so answer is option number B. Quickly coming on to the next question. थ्रिल अकाउंट. थ्रिल नहीं है सस्पेंस से थ्रिल आ रहा है क्या आपको? कोई सस्पेंस मूवी चलने वाली है क्या अभी? अकाउंटेंट के लिए सस्पेंस है. चलिए, हाँ, थ्रिलर अकाउंट. द पार्टी विच इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑन अ बिल इज नोन एज. तो क्या हुआ? ओके, मैंने, हाँ, वन साइड एरर में सस्पेंस अकाउंट, राइट. ऑल ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन नंबर बी पी. मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग ऑप्शन नंबर बी पी. सो मैंने निधीश पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और इस बिल ऑफ एक्सचेंज में निधीश को ऑर्डर दिया कि यू हैव टू पे रुपीज 10,000 टू रुचि. तो क्या हुआ था कि रुचि से मैंने कुछ सामान खरीदा था 10,000 का और निधीश ने मेरे से कुछ सामान खरीदा था 10,000 का. So I told Nidish कि you pay rupees 10,000 to Ruchi. Okay. So now in this case I have drawn this bill of exchange. I have made this bill of exchange. I am going to be the drawer. Nidish is going to be drawee, and Ruchi is going to be the beneficiary or the payee of this bill of exchange. So the party which is ordered to pay the amount on a bill of exchange is known as the payee. सॉरी यहां पे हम क्या पूछ रहे थे? अरे कंफ्यूज करते हो. मेरे को भी लगा एक बार पढ़ के यार ये पेही वाले आंसर आ कैसे गए. पार्टी जिसको हमने ऑर्डर दिया है, द पार्टी विच इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसको ऑर्डर दे रहे वो कौन है? ऑर्डर दे रहे वो तो निधीश है. सो निधीश इज ड्रॉई हियर. सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए, ड्रॉई. सबने कंफ्यूज कर दिया पेही आंसर देकर. बताओ, निधीश काफी सामान खरीदता है क्या? हाँ विनायक, हमने पकड़ लिया, बच्चे हमें गुमराह कर रहे थे. ऐसे मत करो. हाँ, ड्रॉई होगा आंसर. शर्म नहीं आती ऐसे करते हुए क्या आप सभी को? सर आप तो सीरियस हो गए, हमसे तो गलती हो गई थी. चलो कोई बात नहीं. रिफ्यूजल बाय द एक्सेप्टेड टू पे द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट इज कॉल्ड. बताइए जी. निधीश ने रुचि को पेमेंट करनी थी, निधीश फेल्ड टू पे. फेल हो गया जी. एग्जाम में तो पास होंगे बट पेमेंट करने में फेल हो गए.
So in this particular case, we use this term dishonor. हाँ, ऑप्शन नंबर ए, डिसऑनर हो गया बिल, बिल डिसऑनर हो गया. कोई कंफ्यूजन रहने नहीं देंगे, बिल्कुल चिंता मत कीजिए. कोई रह गई है तो लास्ट में आपको करा देंगे. निधीश कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं नहीं किसी के पैसे मारता. चलो अच्छी बात है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए. बट देयर इज अ टर्म वी यूज फॉर इट. दिस इज डिसऑनर ऑफ बिल. बिल की हमने ऑनर नहीं रखी, बिल की इज्जत नहीं करी. सो दिस इज डिसऑनर ऑफ द बिल. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन प्रॉफिट्स के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए. 9 बज चुके हैं. जिसको नींद आ गई है वो जा सकता है, जिसको सेबी का एग्जाम पास करना है वो रुके रह सकता है और आंसर दे सकता है. करेक्ट ऑर्डर बताइए. असर्टेनमेंट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Okay, Nidish, crystal clear. It's really good to see. It's really good to see the josh that you guys are having. निशा थोड़े एडवांस लेवल पे चले गए, इसे अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में करेंगे. बी और सी एक डिसाइड कर लो ना. सबसे पहले क्या निकालते हो? सबसे पहले हमारी सेल्स आती हैं. सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आता है. ओके, इसमें से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को रिड्यूस करते हैं. देन वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. फ्रॉम दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी रिड्यूस आवर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, आवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, आवर टैक्स एक्सपेंस. देन वी गेट द नेट प्रॉफिट. अरे यार आपको दिख नहीं रहा होगा ना शायद. चलो लास्ट में आपका है नेट प्रॉफिट. ओके, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दिस गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट. एंड उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालोगे, द बिजनेस से जुड़े हुए जो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग, रेंट, जो भी आपने खर्चा किया है ऑपरेशन से जुड़ा हुआ. एंड देन basically you are going to get the operating profit and then you are going to get the net profit. So this is how the sequence is followed. Okay, so let me try to explain it again to Lakshmi. Okay, let's do it for Lakshmi. So Lakshmi, what happened was, let's come to Gada Electronics, right? So in Gada Electronics, Mr. Jethalal, he bought TV sets. He bought 10 TV sets for rupees 10,000 each. Okay, तो कितना अमाउंट हो गया? The amount is rupees 1 lakh. And he sold, during the year, he sold 5 TV sets for 15,000 each. So the amount is 75,000. So how much profit he has made? Can you guys tell me the profit that he has made? Lakshmi, can you tell me the profit that he has made? Can you tell me the profit that he has made? So we have to follow this matching concept. So we are to compare 5 purchases with 5 sales only, then only we are going to get the profit. Okay, so the cost of goods sold, 5 goods are sold, and the cost of these goods sold, it was 10,000 each. So sales minus cost of goods sold, 5 into 10,000, it is 50,000. Okay, so now 25,000 is my gross profit. And from this 25,000 he has to pay lots of other expenses. Maybe Nattu Kaka ko salary deni hai 10,000 ki. So this is one operating expense that has to be met. So now the operating profit is going to be 15,000. Okay, and then maybe he has taken a loan on which interest of 5,000 is to be paid. So this 10,000 is going to be the net profit. So this is how this concept is to be applied. Now Lakshmi, you are saying 25,000. It's really good to hear from you and all of the other lovely people as well. So yes, the correct answer is option number C. Chaliye, let's come to the next question. Income tax paid by a sole trader is reflected in his financial statements. Bataiye, how you are going to reflect the income tax paid by a sole trader? You are most welcome, Lakshmi. May God bless his soul. Yaar, he was a lovely person. नटू काका ना. माइक्रोमैक्स 32 इंच. अरे जी तू कैसी कैसी बात करते हो, अभी दिल में जिंदा है नटू काका हमारे. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 47. बी सी डी भी आ गया, ए रह गया, ए भी कोई दे दो ना. सो इनकम टैक्स इज बेसिकली अ पर्सनल एक्सपेंस. इनकम टैक्स इज बेसिकली अ पर्सनल एक्सपेंस. सो पर्सनल एक्सपेंस अगर कोई पे किया आपने
आप उसे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? यू आर गोइंग टू रिड्यूस इट फ्रॉम द कैपिटल. You are going to reduce it from the capital. So that's why answer is going to be option number C. Remember, it is a personal expense of the owner. जेठालाल का personal expense है, उनका income tax. So he has to pay it from his own pocket. बिजनेस ने प्रॉफिट्स कमा के जेठालाल को दे दिया, अब उस पर टैक्स देना जेठालाल की ड्यूटी है. राइट. Rent paid. Let's solve it. Rent paid October 20 to September 21 is rupees 2400 and October 21 to September 2022 is 3200 and we have to tell कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम बना रहे हैं 2021 का, it means January to December 2021 if we are preparing the profit and loss account. Okay, so in this particular case what amount is going to be recorded as the expense? What amount is going to be recorded as the expense? चलिए मैं अपना सॉल्व करता हूं, आप अपना कीजिए. तो यहां पे हमारे पास अक्टूबर से सितंबर का हमने पे किया, तो इट मींस यहां पे 9 मंथ्स जो सितंबर तक आए उनका रेंट इस 2400 में इंक्लूडेड है. दिस 2400 इंक्लूड्स 9 मंथ्स ऑफ द 2021. सो 9 मंथ्स का कितना होगा? 12 मंथ्स का 2400 है, तो 9 मंथ्स का कितना हो जाएगा जी? दिस इज गोइंग टू बी 1800 एंड सिमिलरली दिस 3200 इंक्लूड्स 3 मंथ्स ऑफ 2021. सो 3200 into 3 by 12, so 3 months का कितना होगा यहाँ पे? This is going to be 800, right? ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना? हाँ, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. अरे बाप रे बाप, 18800 वाला कौन है? हाँ, 2600. निखिल इज राइट. 2600 इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस वन. सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट ना. 9 मंथ्स और 3 मंथ्स. इसमें आपको याद रखना है कि अकाउंटिंग पीरियड इज गिवन एज December 2021, so January to December. So it's not April to March, it is January to December, which is given in the question. So that's how you have to follow. So this question specifically says accounting year ended 31st December, so you have to follow this only. So financial year is not going to apply on this question. Yes, now 2600, right? Lokesh has corrected his mistake. It's really good to see. Okay, now all of you are saying option number A, which is perfectly good. Next question. Net profit of a firm before charging the commission is 21,000. Manager is entitled to 5% commission on the profits. How much commission is the manager is going to get? How much commission the manager is going to get? So 21,000 is the profit. मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं, आप अपना कीजिए. और ये मैनेजर कमीशन से पहले, इट इज बिफोर द कमीशन, एंड वी हैव टू गिव 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग द कमीशन. अरे बाप रे. So let me assume profits after charging the commission is rupees X. Okay, profit after charging commission is rupees X. So 21,000 में से if I deduct 5% of X, यानी कि 0.05X, it is equal to X. So 21,000 is equal to X plus 0.05X. It is going to be 21,000 is equal to 1.05X. So if I solve this thing, what my answer is going to be 21,000 divided by 105 into 100. So 21. So this is going to come out to 20,000, right? 20,000 is going to be my profit after commission. So commission is going to be 5% of 20,000, that is 1,000. Option B आंसर होगा जी. आपने तो मेरे से भी पहले सॉल्व कर ली. You guys are super intelligent. Yes, answer is going to be option number B, 1,000. अनिल, आपको सिंपल लग रहा है, बट सबके लिए सिंपल नहीं है. Which of the following types of accounts are shown in balance sheet? Balance sheet में कौन से अकाउंट आते हैं बताइए. We have 3 accounts: real, personal and nominal. Nominal accounts are your expenses and incomes. Your incomes and expenses. So these expenses and incomes, they are basically taken to income statement, P&L.
So this is not going to come. And right, you guys are saying option number A, which is perfectly fine. Option number A is correct. Only real and personal accounts are going to be taken to the balance sheet. Nominal accounts are going to be taken to the income statement. So answer is option number A. Right. चलिए, ऑल नहीं आएगा जी. अनिल क्या बोल रहे हो बताओ. अनिल कह रहे थे पिछले क्वेश्चन को बहुत आसान है और इसमें ऑल आंसर दे रहे हैं. ऐसे मजाक मत करो ना. चलो जी, लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट. मैं अपना सॉल्व कर रहा हूं, अपना कीजिए. सेल्स इज 1 लाख. आई एम गिविंग सम अदर इंफॉर्मेशन और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने. So gross profit is sales minus cost of goods sold. Okay. Cost of goods sold कैसे निकालेंगे? Let's see cost of goods sold, how it is to be computed. It is opening stock plus purchases plus wages. It says कि it has to be included. Okay. Minus closing stock. So we know closing stock is 3,000 more than the opening stock. So this is given. So opening stock minus closing stock, how much this is going to be? Opening stock minus closing stock, this is going to be minus 3,000, right? Yes, this is going to be minus 3,000. Plus purchases is 60,000. Plus wages is 7,000. So solving it, it would come out to 64,000. So 64,000 is cost of goods sold. Gross profit is going to be 36,000. Yes, super intelligent people. You are all saying 36,000 is to be the answer, and this is the answer. No, numericals are not going to be like a lot of numericals, but yeah, some numericals are going to be definitely going to be there. Next question. Heavy amount spent for advertisement of a new company product is which kind of expenditure? I believe you already know about capital and revenue expenditure. Capital expenditure are basically your fixed assets which are going to give you benefits for a very long term. Revenue expenditures are your normal day-to-day recurring expenses that you are making, your salary, your rent. These are revenue expenditures. And in between, we have this another category. Yes, Vinayak is right. We have this other category of deferred revenue expenditure. So there are some very big expenses that we have incurred. The amount involved is very big. Let's suppose we have spent 5 crore on this advertisement campaign, and this is going to give us benefit for, let's suppose, 5 years. So now, though this is a revenue nature expenditure, advertisement is a revenue nature expenditure, but still the amount is so big that if I include it in my revenue expenditure, I am going to incur losses in the year. And this is not I want to show in my books of accounts, and also this amount is going to benefit me in the coming years as well. So we call it deferred revenue expenditure. We call it deferred revenue expenditure. This is a revenue expenditure which is being written off in a deferred manner. Okay, so every year I am going to write off, say, 1 crore in my income statement. So answer is option number A. Okay, now let's come to the next question. Slightly typical. पिछले के आंसर सबके सही थे. हाँ, महक बिल्कुल सही. हाँ, बीजेपी की एडवर्टीजमेंट यूपी के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है. अगले 5 सालों के लिए फायदा देने वाली है. राइट. इन्वेंट्री इंक्लूड्स. इन्वेंट्री में क्या आएगा? देखो, इन्वेंट्री की डेफिनेशन इज वेरी वाइड. नो हर्षिता. I'm getting the answer as option number D, and this is perfectly correct answer. Okay, so inventory के अंदर क्या चीजें आती हैं? Inventory के अंदर you include the goods which you have kept for selling purpose, and we also include the materials, maintenance, supplies, consumables, and loose tools which are to be used in the production process. For example, let's suppose you have some lubricants with you, some other stuff which is to be used in the production process. So we also include it in the inventory. But it does not include any machinery spare. So if you have any spare part for your fixed asset, then you are not going to include it in your inventory. This is as per the accounting standards which have been issued. Okay, this is as per the accounting standard 2. This inventory is as per the accounting standard 2, and this machinery spare is dealt with as per accounting standard 10. चलिए, next question. Cost of inventory is comprise.
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री में क्या आएगा? आपने कुछ सामान खरीदा, परचेज किया, रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट किया आपने, कन्वर्जन में खर्चा किया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए खर्चा किया, कन्वर्जन कॉस्ट, दिस इज आल्सो टू बी इंक्लूडेड। यस, तो इन रॉ मटेरियल की कंडीशन में आपने जो चेंज किया उस पे जो भी खर्चा आप कर रहे हैं, द कन्वर्जन कॉस्ट, एनी कॉस्ट विच यू आर इनकरिंग टू ब्रिंग द इन्वेंट्री टू द प्रेजेंट कंडीशन, दिस इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर इन्वेंट्री। सो आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट, यू गाइज आर एब्सोल्युटली राइट। तेजस्विता, जीतू, विनय, कंसिस्टेंटली यू आर गिविंग द राइट आंसर। मशीनरी की बात नहीं हो रही, इन्वेंट्री की बात हो रही है यहां पे जी। मृदुला, we are talking about inventory here. We are going to talk about machinery later on. Now next is FIFA formula. What is this FIFA formula? FIFA means first in, first out. पहले जाएगा, पहले बाहर आएगा। A और B के आंसर्स आ रहे हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। सपोज आई हैव अ शर्ट्स बिजनेस, ओके, तो शर्ट्स में सिमिलर परचेज कर रहा हूं, व्हाइट कलर की शर्ट्स का बिजनेस है, आई एम हैविंग दिस बिजनेस ऑफ व्हाइट कलर शर्ट्स, ओके। सो नाउ I purchased 10 white color shirts at rupees 100, then I purchased 5 white color shirts at rupees 120, okay. Now I am going to sell these shirts. Let's suppose I sold 8 shirts, like let's suppose I sold 8 shirts for rupees 200. Now which shirts have been sold? Whether these 10 shirts have been sold or these 5 shirts have been sold. If we are following this FIFO method, it means first in first out. It means जो आपने पहले purchase किया था, you are going to sell it first. So it means I have sold out of these 10 shirts. So items जो आपने पहले purchase किया था, they are sold first. So B is going to be the correct one. And the stock that I am having 7 shirts which are still there in the stock. This is basically going to comprise of my latest inventory. Okay, this is going to comprise of the latest inventory. So what should be the answer? Option number B is only correct. FIFO के लिए option number B is only going to be correct. A and C आपके LIFO से जुड़े हुए, last in first out. इसका opposite है last in first out, LIFO method. Okay, right, बिल्कुल। ऑप्शन बी इज ओनली गोइंग टू बी करेक्ट कि जो पहले खरीदा वो पहले कंज्यूम होगा, वो पहले बेचा जाएगा। फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। चलो जी, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है, गलत है, बताइए। इन्वेंट्रीज की अकाउंटिंग में एक प्राइमरी इशू रहता है कि किस वैल्यू पे इन्हें रिकॉर्ड किया जाए, राइट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, एनआरवी। व्हाट इज एनआरवी? कि इन्वेंट्री बेचने में आपको जो खर्चा होने वाला है आप उसे भी रिड्यूस करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन को भी रिड्यूस करेंगे, दिस इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट, परफेक्टली फाइन आंसर्स फ्रॉम विनायक, अनुराधा, नदीम, निखिल, Anuradha, Lakshmi, all of you are saying option number C. This is perfectly fine. Inventories should be valued at lower of cost and NRV. तो इतना बड़ा क्वेश्चन देके some of the people they might have got confused. They might have left this question. But this was super easy. बहुत easy question था. बहुत easy question था. Answer is option number C. So now let's come to the next question. Principal issue in accounting for property, plant and equipment. Accounting standard 10 के अंदर आप कौन कौन सी चीजों से डील करते हैं, बताइए। यू नो, इवन इफ यू आर फीलिंग कि यार अब तो बहुत हो गया, इतना तो दिमाग में जा नहीं रहा है, बट स्टिल जितना भी दिमाग में अब्सॉर्ब कर पा रहे हो, जस्ट डू ट्राई टू अब्सॉर्ब इट, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर योर एग्जामिनेशन। नदीम, विनायक, सोनिया ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, विच इज परफेक्टली राइट। आपको डिसाइड करना है कि कौन से एसेट्स को रिकॉग्नाइज करें, विच एट विच अमाउंट दे आर टू बी कैरिड एंड हाउ मच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, all of the above is the answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अप्लाइज टू, बताइए जी कौन से एसेट्स पे अप्लाई करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10? आई कैन क्लियरली सी कि कितना अच्छा मुझे रिस्पॉन्स आप सभी से मिल रहा है. ऑल ऑफ यू गाइज आर गिविंग द आंसर्स. इट्स रियली गुड टू सी द चैट बॉक्स टिकिंग. Accounting Standard 10 applies to biological assets, wasting assets, investment in securities, all of the above or none of the above? None of the above, all of the above वाला कौन है भाई? अरे बाप रे बाप, मामला गड़बड़ है. निखिल, Nikhil has given the correct answer. It is not applicable to any of these. Biological assets पे अप्लाई नहीं होता. इन्वेस्टमेंट से आपका AS13 डील करता है. वेस्टिंग एसेट से भी AS10 डील नहीं करता. वेस्टिंग एसेट्स आर बेसिकली योर माइंस एटसेट्रा विच आर गोइंग टू बी वेस्टेड व्हेन यू आर गोइंग टू यूज देम. ओके, so answer is going to be option number E, none of the above. It is not going to apply on any of these. None of the above is going to be the answer. Which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन बना दिए आपने. मुझे क्या पता था आप डर जाएंगे. राइट. In general, Ankita, we have to answer, Anuradha, we have to answer this as per the general principles. Okay? आप क्वेश्चन को गलत मत कीजिए ना. We have to generally answer it. चलिए बताइए, which of the following is incorrect? Carrying amount, cost of asset less residual value. Depreciation is the systematic allocation. Residual value of an asset is the estimated amount that an enterprise would obtain from the disposal of the asset. Impairment loss is the amount by which the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. तो अगर आपका कोई एसेट आपकी किताबों में 12,000 का आ रहा है, बट यू सी कि आप इसे मार्केट में अगर रिकवर करेंगे, इट इज ओनली गोइंग टू रियलाइज 10,000. So sometimes we recognize this 2,000 as the impairment loss. This is the impairment loss. So we have to answer which is incorrect here. हाँ बिल्कुल हो सकता है प्रसून, डोंट वरी अबाउट इट. हाँ तो यहां पे आपकी ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगी. बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए कैसे गलत हो जाएगी? क्योंकि कैरिंग अमाउंट आपकी क्या होती है? कैरिंग अमाउंट आपकी क्या होती है जी? कैरिंग अमाउंट आपकी होती है जो अमाउंट आपकी बुक्स में आप कैरी कर रहे हैं. तो आप अपनी बुक्स में जो अमाउंट कैरी करते हैं, दिस इज कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन. दिस इज कॉस्ट लेस डेप्रीसिएशन. सो दैट्स व्हाई आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट. चलो जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following would be classified as cost of an item of property, plant, equipment as per AS10? तो आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है रिलेटेड टू द फिक्स्ड एसेट्स, उसमें कौन सी हमारी कॉस्ट में इंक्लूड होने वाले हैं, बताइए. लेट्स सी कौन इसका सही आंसर देता है. न्यू फैसिलिटी खोल रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई आप नई लोकेशन में बिजनेस कर रहे हैं, तो यहां पे आप सब जगह पे यू आर गोइंग टू इनकर हेवी एक्सपेंस. बट वेदर दिस इज अ फिक्स्ड एसेट एज पर AS10, राइट अग्निक? वेदर दिस इज, बाप रे बाप, बल्क में गलत आंसर आ रहे हैं. किरण is the only one who has answered this one correctly. So do remember guys कि though these expenses they are very big amounts, but still they are not fixed assets as per the accounting standard 10. तो इनॉग्रेशन पे आप खर्चा कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कर रहे हो, तो स्टाफ की ट्रेनिंग पे खर्चा कर रहे हो. सो दीज आर नॉट द फिक्स्ड एसेट्स. ओके, नहीं पता तो लर्न कर लो, अब नहीं आप भूलोगे. इफ यू सॉल्व दिस वन, आप इसे दोबारा नहीं भूलोगे. यू विल नॉट मेक दिस मिस्टेक अगेन. चलो जी, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. हाँ, ई वाला आंसर बिल्कुल सही था पिछले क्वेश्चन का. एबीसी कंपनी ने एक मशीन खरीदी है. मशीन फरवरी में आ गई, बट उसकी इंस्टॉलेशन और सर्टिफिकेशन का काम जो पूरा हुआ वो अप्रैल में हुआ, और हमने एक्चुअली में उसे प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जुलाई में. डेप्रीसिएशन कौन से महीने से लगाएंगे? फरवरी से, अप्रैल से या जुलाई से? विनायक कह रहे हैं हर एक्सपेंस को P&L में डाल दो. ऐसा नहीं है जी, कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है विनायक. तो ये कहानी है अकाउंटिंग की, इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है. एब्सोल्युटली करेक्ट ऋषभ, प्रीति, सोनिया, विनायक.
तो जब आपके पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, हमारे पास एसेट अप्रैल में अवेलेबल फॉर यूज हो गया था, एसेट वाज अवेलेबल फॉर यूज इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ, दो वी एक्चुअली यूज्ड इट इन जुलाई, but since it was available for use in April, we are going to charge depreciation from April. So answer is option B. बिल्कुल अप्रैल से चार्ज करेंगे निदेश। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be included in revenue as per the accounting standard 9? accounting standard 9 जो है वो आपसे, अरे पुट टू यूज इनकम टैक्स में होता है भाई लोकेश, इसको यहां पे मत लेकर आओ, हाँ हटा लिया, अच्छा किया। चलो जी, which is included in the definition of revenue as per accounting standard 9? Gain from disposal of fixed assets, unrealized gain from non-current assets, unrealized gain from current asset, और your foreign exchange gains। कौन सा इंक्लूड होगा AS 9 के अंदर, बताइए फटाफट से। What all are going to be included? सर देखो, जो आपके डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट से हैं वो तो एस 10 में आएंगे, ठीक है जी, और अगर आपके इन्वेस्टमेंट से हम डील कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स के कोई गेन है तो वो आपका एस 13 के अंदर आएगा, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स वाले हमारे जो हैं एस 11 के अंदर आएंगे। So all of these, they are not part of accounting standard 9, and till now nobody has given me the correct answer. Yeah, Nikhil has given me the correct answer, Nikhil Sharma. He is the genius one here. Anuradha is also correct. Answer is option number E. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और रेवेन्यू रिलेटिंग टू इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रॉयल्टी। ओनली दीज आर इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ओके गाइस, ओके, जस्ट डू रिमेंबर इट कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में केवल यही आता है, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी आपके रिवाइज हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फटाफट से, बहुत आसान सा, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करने के लिए उनको किसमें एक्सप्रेस करना पड़ता है, बताइए। हाँ, निधीश भी कह रहे हैं ई है, बिल्कुल। चलो अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। सो लेट्स सपोज हमारा इंडिया के अंदर हेड ऑफिस है, बट हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, एंड दीज ऑपरेशंस दे आर इन यूएस। ओके, इंडिया हेड ऑफिस, एंड यूएस वी हैव सम अदर ऑपरेशंस। So now reporting currency of the enterprise is going to be the currency in which it is going to do its reporting. Its financial statements are going to be prepared in rupee terms. But this the US wale operations, they are going to be in dollar terms. So now we have to convert these dollars into rupee terms. So we have to convert these into the enterprise reporting currency. We have to convert it into the reporting currency, right? Sonia is right, Nadeem is right, yeah, all of you are right। जो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, जो सी बोल रहे हैं वो गलत है, जो सी बोल रहे हैं वो गलत है जी। यहां पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंटरप्राइज की रिपोर्टिंग करेंसी में। तो हमारी एंटरप्राइज इंडिया में है तो उनको रुपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो उस बैलेंस शीट में मैं अपने डेटर्स में लिख रहा हूं $100, फिक्स एसेट में लिख रहा हूं 10,000 रुपए। So this is not going to happen. Okay, we have to convert it into rupees only. This has to be converted into the reporting currency of the enterprise. So that's why the answer is going to be option number A. तो जो भी आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस हैं, जो भी आपके फॉरेन ऑपरेशंस हैं, you have to translate into the reporting currency. दोनों का आंसर रिपोर्टिंग करेंसी है, दोनों का लोकल करेंसी आंसर है। एग्जैक्टली जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं और जो भी आपके फॉरेन ऑपरेशंस हैं, all have to be converted into reporting currency, right? As per AS 11 at each balance sheet date, बताइए AS 11 के अकॉर्डिंग हर बैलेंस शीट डेट पे क्या होने वाला है। सो यू रिमेंबर कि हमने आईफोन खरीदा था जॉन से, राइट? आईफोन खरीदा था ना जॉन से, तो उस आईफोन को हमने क्रेडिट पे खरीदा था, वी बॉट इट ऑन क्रेडिट। ओके, लेट्स सपोज वो आईफोन हमने खरीदा था $500 का, ओके, एंड जो $500 का आईफोन हमने जॉन से खरीदा था, इट वाज गॉट ऑन क्रेडिट, एंड लेट्स सपोज $1 वाज ₹50 at that particular point of time. So now if I'm going to record it in my books of accounts, I'm going to record it at ₹25,000. Okay, but now when on 31st March I was preparing my books of accounts, then the value of the dollar changed. The value of the dollar, it changed to $1 is equal to ₹60. And now I have this liability towards Mr. John of $500, and now I have to discharge him in dollar terms.
अब मुझे उनको डॉलर देना पड़ेगा, सो माई लाइबिलिटी हैज सॉर्ट ऑफ इंक्रीज्ड, सो आई हैव टू रिकॉर्ड इट इन dollar terms at 500 into 60. 30,000 is going to be my liability, but my iPhone, that rupees 25,000 iPhone is still going to be recorded at rupees 25,000 only. So this is what this question is asking. You guys are saying answer should be option number D, and this option number D is perfectly right. कैसे right है कि आपकी जो मॉनिटरी आइटम्स होती हैं, जो मिस्टर जॉन थे वो हमारे पास मॉनिटरी आइटम थी, हमने उसे क्लोजिंग रेट पे रिकॉर्ड किया, $1 is equal to 60 पे रिकॉर्ड किया, and the non-monetary items they are carried at the historical cost. So हमारा जो iPhone था उसे हमने historical cost पे ही रिकॉर्ड किया. So correct answer is A and B. Absolutely correct. Next question, a very simple one. Yes, हाँ बिल्कुल जी. Okay Nadeem, that's really good to hear. As per accounting standard 11, foreign operations are classified as. Foreign operations को कैसे classify करते हैं? देखो जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर हमारे पास फॉरेन ऑपरेशंस को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. वन इज योर इंटीग्रल एंड अदर इज योर नॉन इंटीग्रल. तो कुछ फॉरेन ऑपरेशन आपके ऐसे होते हैं, हाँ विनायक इज राइट, विनायक हैज गिवन द राइट आंसर. सो कुछ फॉरेन ऑपरेशंस हमारे ऐसे होते हैं विच आर इंटीग्रल, यानी कि सपोज आई ओपन माई शॉप इन लंडन. ओके, नाउ देयर कैन बी टू वेज कि जो लंदन की शॉप में जो भी सारा सामान आ रहा है मैं वो इंडिया से बेच रहा हूं, और जो भी सारा सामान यहां पे लंदन में बेचा जा रहा है उसके पैसे इंडिया में ही आ रहे हैं. सो दिस इज बेसिकली माय इंटीग्रल ऑपरेशन. ओके, बट सपोज आई हैव ओपन्ड माय शॉप इन लंदन एंड दिस लंदन वाला शॉप इज परचेजिंग फ्रॉम लंदन ओनली एंड इज सेलिंग इन लंदन ओनली, and whatever it is receiving it is investing in London only. So this is a non-integral branch. Okay, so this is the difference between the two. This is the difference between the two. Accounting standard 11 it talks about integral and non-integral foreign operations. गोकुल कह रहे वेरी टफ क्वेश्चंस. नहीं जी, आप इनको एक बार याद कर लेंगे ना, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर हो जाएंगे. इफ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड. अगर मैं क्वेश्चंस आसान डालता हूं तो आप कहते बहुत आसान है. बी प्रिपेयर्ड, आपको कुछ मुश्किल क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे. इफ यू आर गोइंग टू गेट स्केयर्ड देन यू आर नॉट गोइंग टू एस दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज लेट्स फेस इट, दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नॉट एवरीवन इज गोइंग टू क्लियर इट. यू हैव टू बीट द कॉम्पिटिशन टू स्टे इन द रेस. इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज. बताइए जी, इजी क्वेश्चन आ गया, अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ. ये मुश्किल नहीं है, ये है कि आपको पता है कि नहीं पता है. अगर पता है तो आसान है, नहीं पता तो मुश्किल है. ये तो आसान क्वेश्चन है, अब इसका आंसर दो सारे फटाफट से. हाँ, अनुपमा, निखिल, नदीम, अंशु बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं. इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल, और फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन. सो इफ आई इन्वेस्टेड सम मनी इन द शेयर्स ऑफ रिलायंस, देन बेसिकली मैंने क्यों लगाया पैसा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, कैपिटल एप्रिशिएट हो जाएगा, एंड आई एम गोइंग टू गेट डिविडेंड्स आल्सो ऑन दिस पर्टिकुलर अमाउंट. सो यस, द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. हाँ बिल्कुल, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आप रॉकिंग हो जाएंगे क्लास के बाद. विनीत दहिया, कुछ नहीं पता हमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें तो तैयारी करनी है सारी की सारी. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, so this is accounting standard 13 related to your investments. बताइए, how are investments classified? I can see the number of people, this is declining, and eventually the number of people who are going to stay in the session, they are going to be the ones who are going to actually crack this examination. The people who have, like, they are not feeling like attempting these questions, they are afraid of these, they are ultimately going to lose. So if you are still here, you have made it to the 67th question, you have like attempted 2/3 of all these questions. Okay, अब हाथी निकल गया, बस पूंछ रह गई है. बस आसान क्वेश्चंस है कुछ लास्ट में, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे लास्ट में, अब उनको फटाफट से सॉल्व करना है. चलिए, इसी के साथ आंसर्स आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ई के. ओनली ए एंड बी आर ट्रू, और ए एंड बी आर ट्रू के जो आंसर्स हैं दे आर परफेक्टली राइट. ऐसा क्यों राइट है? इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म करंट होती है हमारी, और आप इसकी कॉस्ट में जो बाकी खर्चा है ब्रोकरेज वगैरह वो भी इंक्लूड कर ही लेते हैं. बट हाँ, आप इन्वेस्टमेंट को जब बेचते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होता है, इट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस, इट इज ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट, इट इज नॉट अ कैपिटल रिजर्व. ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग.
सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. चलिए नाउ इजी क्वेश्चंस आ गए. अब इजी क्वेश्चंस आ गए जी. अब आसान सवाल शुरू हो गए. फटाफट से इनको सॉल्व कर लेंगे. आधे घंटे में सवाल सॉल्व हो जाएंगे अब सारे के सारे. नॉमिनल शेयर कैपिटल कौन सी होती है सर? नॉमिनल शेयर कैपिटल, हाँ जी अजय मैंने पहले ही कर दिया. जो यहां डर गए वो एग्जामिनेशन में तो और डर जाएंगे. वहां तो पहले ही आपके ऊपर स्ट्रेस और नर्वसनेस रहेगा. हाँ विनीत तो बहुत सारे एग्जाम दे चुके हैं, कह रहे इससे ज्यादा आता ही नहीं है. कितने एग्जाम दे लिए भाई सेबी के तुमने? आपने नहीं करना वो अलग बात है, बट ऐसा मत कीजिए कि सेबी इनसे सवाल ही नहीं पूछेगा. हाँ चलिए आंसर्स आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी के. ऑप्शन नंबर डी के आंसर आ रहे हैं मेरे पास. दिस इज परफेक्टली फाइन. नॉमिनल इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम कैपिटल जो कि कंपनी इशू कर सकती है. सो मे बी कि 10,000 शेयर्स इंटू ₹100 ये कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल हो और कंपनी अभी इसमें से केवल 8,000 शेयर्स को ही इशू करे. ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जो कि कंपनी ने रिजर्व कर लिया है और उसको केवल वाइंडिंग अप पे ही यूटिलाइज किया जाएगा. इट इज कॉल्ड. अतुल प्लान यही है कि इन सवालों को अच्छे से करके जाओ, सारे सुपर मैराथन सेशंस को अच्छे से करके जाओ. यू विल क्रैक द एग्जाम. कोई दवाई नहीं है कि मैं आपके घर डिलीवर करा दूंगा. मेहनत और पढ़ाई तो करनी पड़ेगी. हाँ तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला तो ये थोड़ी सवाल नहीं आएगा. हाँ देखो सभी आंसर्स करेक्टली दे रहे हैं ना मुझे. ऑप्शन नंबर ए के आंसर दे रहे हैं. तो ये हो सकता है कि आपने कंसेप्ट ना पढ़ा हो, बट स्टिल रिजर्व कैपिटल इज द आंसर. सो दिस इज द अमाउंट विच हैज बीन रिजर्व्ड बाय द कंपनी. सो लेट्स सपोज अ शेयर वाज ऑफ ₹10. The company only called ₹8 from the shareholder and ₹2 is still not called from the shareholders, and this is only going to be called at the time of the winding up of the company. So this is basically reserve. This is basically the reserve and this is your reserve capital. Okay. बिल्कुल ऐसे ही आएंगे नदीम, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे. A company allotted 20,000 shares to applicants of 50,000 shares after rejecting 10,000 applications, the ratio in which the allotment was made. बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे. चलिए जी. तो क्या हुआ कि आईपीओ आया. किसका आईपीओ आया? जोमेटो का. सो जोमेटो के आईपीओ में applications received they were 50,000. applications received were 50,000. company rejected 10,000 applications. 10,000 applications they were rejected, and remaining 40,000 applications which were made, the company allotted only half of the shares to these shareholders. So यहां पे हाफ ही अलॉट किए. तो कितनी रेशो में अलॉटमेंट हुआ? 40 को 20 मिला, यानी कि 2:1 is going to be the ratio. Answer is absolutely right. You guys are all right. Answer is going to be option number C. Very easy question. Another very easy question. Let's solve it. If applicants for 80,000 shares were allotted 60,000 shares on pro rata basis, shareholder who was allotted 1,200 shares must have applied for. तो 80,000 shares के लिए अप्लाई हुआ था and 60,000 shares were allotted on pro rata basis. यानी कि if I applied for 8 shares in the company gave me only 6 shares. This is referred to as pro rata allotment. This is referred to as pro rata allotment. So this question is asking, if someone is given 1,200 shares, किसी को 1,200 shares allot हुए तो उसने कितने के लिए अप्लाई किया होगा? तो what is the ratio? Ratio is 4:3. तो 4:3 के अकॉर्डिंग तो हमारा 3 1,200 है, तो 4 क्या होगा? 4 is going to be my 1,600. सो ऑप्शन नंबर सी वाले आंसर एकदम करेक्ट हैं, ए वाले गलत हैं. ज्योति डोंट मेक द मिस्टेक हियर. 4:3 करना है. 1,600 देखो सिंपल सा फॉर्मूला आपको ये लगाना था. आंसर वुड बी 1,600 शेयर्स. ये तो सिंपल मैथ्स है, कुछ इसमें टेक्निकल तो है ही नहीं है. क्विकली कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ 1,600 वाले ऑल करेक्ट हैं, बहुत बढ़िया. Suppose the following amounts were payable on issue of shares by a company. So a company issued shares and this is how the amount was called from shareholders. Application पे ₹3 मंगाए, allotment पे ₹3, first call पे ₹2 and final call पे ₹2. Now all the shareholders are not
honest people. Some people are not honest, right? So यहाँ पे बताया कि there is a person A who is holding 500 shares. He has only paid the application money. It means he has not paid the allotment, first call and final call. यानी कि 7 rupees is not yet paid by him. And there is another person B holding 400 shares, did not pay the final call. यानी कि he has not paid rupees 2. So how much amount is still pending? Sorry, Mr. A has paid application and allotment. यानी कि he has paid rupees 6. He has paid rupees 6. Yeah, only 4 is pending from him. Yeah, 4 is pending from him. अरे बाप रे, आपने तो फटाफट से आंसर भी निकाल दिए. तो A का 2000 पेंडिंग है और D का 800 पेंडिंग है. तो कॉल इन एरियर कितना हो गया? कॉल इन एरियर का मतलब है कि वो शेयर्स जिन पे हमें पैसे नहीं मिले, द अमाउंट विच वी हैव नॉट येट रिसीव्ड ऑन दी शेयर्स. सो टोटली इट इज गोइंग टू बी 2000 प्लस 800, दैट इज 2800. दिस इज गोइंग टू बी 2800 होने वाला है. Quickly coming on to the next question. Forfeiture of shares, very important topic from examination perspective, guys. इस topic से definitely you can expect one of the or two of the questions can be asked. So let's see if you can answer it. 600 shares of 10 each were forfeited for non-payment of 2 per share on first call and 5 per share on the final call. So on 600 shares, how much amount has not been paid? 2 plus 5 has not been paid. Share is of rupees 10 each. It means how much was paid? It means only rupees 3 was paid. 7 is not paid, only 3 is paid. So when you are forfeiting the shares, how much amount is transferred to the share forfeiture account? So जब forfeit करते हैं शेयर्स को, जो भी अमाउंट उन शेयर्स पे हमने रिसीव किया होता है, that amount is forfeited. That is, क्या कर लेते हैं? उसको जब्त कर लेते हैं, उसे forfeiture अकाउंट में डाल देते हैं. तो कितना अमाउंट डालने वाले हैं जी? राइट, कृष्णा इज राइट. नहीं, कृष्णा इज नॉट राइट. अमाउंट जो हमें पे हुआ है वो कितना हुआ है? 600 इंटू 3 हुआ है ना, 1800 हुआ है. बताइए जी, 1800 इज गोइंग टू बी द आंसर. 3 रुपीज हमें मिले, 7 नहीं मिले. जो मिले उसको जब्त करेंगे ना. 600 इंटू 3, 1800 इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, यस, अब सभी के आंसर ऑप्शन नंबर ए के आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं. अब एक और सवाल. ये सवाल, ऐसा सवाल एग्जाम में आ सकता है, बहुत चांसेस है इस सवाल के आने के. क्वेश्चन इज 2000 शेयर्स ऑफ 10 on which 7 have been called and 5 has been paid. So 10 रुपए का शेयर है, कंपनी has called only 7 on this share and the shareholder has paid only 5. Shareholder has paid on only 5 on it. Okay, and now these are forfeited. तो हमने इनको क्या कर लिया? forfeit कर लिया. तो 2000 शेयर्स पे हमने कितना कर लिया? 5 रुपीज forfeit कर लिया, यानी कि 10,000 को हमने यहाँ पे क्या कर लिया? forfeit कर लिया. ये अमाउंट हमारा forfeiture में चला जाएगा. और 1500 शेयर जो हैं यहां पे रीइश्यू हो गए एट 9 रुपीज एज फुल्ली पेड अप. सो 1500 शेयर्स को हमने फुल्ली पेड अप कर लिया, इशू कर लिया 9 रुपीज पे. यानी कि हमने कितना डिस्काउंट दिया? कितना डिस्काउंट दिया? 9 रुपए पे इशू किया, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया. और ये जो डिस्काउंट हम देते हैं ना, इसे शेयर फॉरफीचर से एडजस्ट करते हैं. तो यहां पे हमसे पूछ रहे हैं कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कितने पे डेबिट करेंगे, कितने को इस्तेमाल करेंगे फॉरफीचर वाले अकाउंट को, ये आपसे पूछ रहे हैं. हाँ, ये मिला 600 इंटू 3, वही तो. हाँ, मानसी भी कर रहे हैं. हाँ हाँ हाँ, सर को कंफ्यूज करके मजा आ गया सर. ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो ना. चलो जी, तो जब आप इनको इशू करते हैं, लेट मी टेल यू हाउ दीज आर री इशूड. जब आपने इसे इशू किया तो आपकी जो शेयर कैपिटल है उसमें तो पूरा अमाउंट आ गया 1500 इंटू 10. बट आपके बैंक में कितना पैसा आया? इन द बैंक यू ओनली गॉट 1500 इंटू 9. So this difference of ₹1 is going to be adjusted from the share forfeiture. तो आप share forfeiture में adjust करेंगे. This 1500 is to be adjusted from share forfeiture. तो 1500 आपका आंसर बनेगा जी. 1500 जो भी आंसर दे रहे हैं, अनुपमा, महक, लोकेश, पायल, वंशिका, अग्निक, गोकुल, you all are right. 1500 हमारे इस्तेमाल होंगे यहां पे. So that's why answer is option number C. चलिए, चलो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई फॉरफीचर नहीं है यहां पे, आसान क्वेश्चन है. अग्निक गलती कर रहे हो, कैपिटल रिजर्व में वो नहीं जाएगा, क्योंकि 2000 का अमाउंट 10,000 है, 1500 को री इशू किया है. ध्यान रखिए, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. आपको 1500 का प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा. वो मैंने पूछा नहीं था सवाल में, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करें. अंजलि ने आंसर दे दिया है जी. नहीं, अंजलि 74 का दे रहे हो.
75 का दो ना फटाफट से। कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर at par, 3 on application, 3 on allotment and 4 on call, 334. So this is how one shareholder who is holding 1000 shares paid the entire amount of his shares with application. तो एक shareholder था, उसने application के समय पूरे पैसे दे दिए। तो हमें 10,000 शेयर्स पे जब हमने एप्लीकेशन के पैसे मंगाए होंगे, कितने मंगाए होंगे? 10,000 इंटू 3, 30,000 मंगाए होंगे। बट एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने इस 3 के साथ बाकी के 7 रुपए भी दे दिए। 7 रुपए कितने शेयर्स पे मिले? 1,000 पे एक्स्ट्रा मिल गए, तो ये 7,000 भी ऐड होगा। तो आंसर शुड बी 37,000 ना। क्या आंसर दे रहे हो? अरे कंफ्यूज हो गए आप। 37,000 आंसर होगा हमारा। हाँ, ऑप्शन नंबर ए 37,000 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी 37,000 आंसर होगा जी। सोना नहीं है जी, जागते रहना है। अभी हमारे 25 सवाल और बाकी हैं, उनको भी सॉल्व करना है। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे पता था सभी गलती करेंगे, आपने उसे पूरे के पूरे अमाउंट से ऐड कर दिया और गलती हो गई। अब बहुत आसान सवाल है, अब तो बहुत बहुत आसान सवाल आ गए। अगर ये आसान सवाल गलत हो गए ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, नदीम कह रहे हैं ओके अब क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। चलो जी, करंट लायबिलिटी में कौन सी आइटम नहीं आती? परफेक्टली राइट आंसर, परफेक्टली राइट। तेजस्विता, व्हाट इज नॉट क्लियर? टेल मी व्हाट इज नॉट क्लियर। करंट लायबिलिटी के अंदर deferred tax liability is not going to come because it is shown under the non-current liability. I told you about this concept of deferred tax liability, not much important. Just remember it is a non-current liability or a non-current asset. Okay, it is not a current liability. Short-term borrowing, provision and trade payable, they are current liability. तो option B आंसर हो गया। So now let's quickly come to the next question. Forfeited shares is shown in which head, subhead in the balance sheet of a company? The shares which were forfeited, हाँ, अगर एसेट होता तो फिर नॉन करंट एसेट्स में आता। Forfeited shares, in which head are you going to show them while preparing the balance sheet of the company? आपने shares forfeit कर लिए, but this is basically the share capital, and that's why absolutely right. Tejaswita, Sujata, Sabha, absolutely right. This is going to be shown under the share capital only. This is your share capital. अमाउंट में कंफ्यूजन था तेजस्विता, कोई बात नहीं, लास्ट में करते हैं उसको, है ना। अभी फटाफट से इसको कंक्लूड कर लें। चलो जी, विच इज नॉट अ सब हेड अंडर द करंट एसेट्स। बताइए इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है? विच इज नॉट अ करंट एसेट आउट ऑफ दीज, विच इज नॉट अ करंट एसेट। Absolutely right. आपके जो ट्रेडमार्क हैं, it is what? It is a fixed asset. It is a intangible fixed asset. So that's why this is going to be your answer. Your cash, your short-term loans, your inventories, they are current assets. So answer is option number B. Perfectly right answers from Sujata, Shalini, Anjani, Agnik, Maitri, Vinayak, Sonia. It's really good to see the momentum that you guys are keeping till now. It's really good to see. Next question. Proposed dividend is a dash liability. कंपनी ने प्रपोज किया। सर ये प्रपोज डे वाला प्रपोज है? नहीं। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया, ये वो वाला प्रपोज नहीं है। वो प्रपोज कोई लायबिलिटी होता है क्या? आपकी गर्लफ्रेंड कोई लायबिलिटी बन जाती है प्रपोज करके? ये प्रपोज्ड डिविडेंड है। दिस इज डिफरेंट। इट मींस द कंपनी हैज प्रपोज्ड, आई एम गोइंग टू पे दिस मच ऑफ द डिविडेंड टू माय शेयर होल्डर्स वेरी सून। वेरी सून आई एम गोइंग टू पे। सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी? Because it is to be paid very soon, this is going to be my current liability. Right, Lokesh? Some of you are right. Lokesh is right, Vinay is right, Payal is right, Anjali is right. This is my current liability. So after you have proposed it, this is basically going to be shown under the provisions in the balance sheet in the liability side. This is a short-term provision. You are going to make a provision that this amount we have to pay to the shareholders. Now this has become your obligation. You have proposed it. आपने गर्लफ्रेंड को प्रपोजल दे दिया, so now if he accepts, तो आपको यहाँ पे उसकी डिमांड्स माननी पड़ेंगी। तो आपको उसकी डिमांड्स माननी पड़ेंगी। So this is going to be shown as a short-term provision. Okay. So that's why this is a current liability.
Yeah, this is a provision as of now. This is a provision as of now. So it is going to be shown in a short term. It is a short term obligation of us. Okay. Actual liability, it is going to become only after declaration. So we are only making a provision till now, Vinayak. Okay. Okay, Rahul, if you are saying like this, I will definitely recheck it. I will definitely recheck this particular question, and I will pin a comment if there is any change in this. Okay, if you are saying like this. Yeah, there was some change with regard to it which was made. I will check it. Okay, I'll check it and I will post in the comment section. Okay. So let's quickly move on to the next question till then. Okay, Rahul, I'll check it again. Don't worry. Okay, I'll check it. So next question, the analysis that is made to review and analyze the financial statements for a number of years is known as. प्रोविजन करना होगा बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिज्म में हम प्रोविजन पहले कर लेते हैं ना अनिल, इसीलिए. बाकी आई विल चेक, जो हमें कह रहे हैं ना कि लीगली कोई चेंज आया, देयर इज सम चेंज इन द लॉ, आई विल चेक इट. Maybe that change was not updated in the textbook that I was referring while preparing these questions, so I'll recheck it. Okay. I'm getting the answer is option number A. So you are analyzing your financial statements for a number of years, 2020, 2021, 2019, okay, 2022. So what you are doing, you are doing a horizontal analysis. You are doing a horizontal analysis. If you are comparing only for 1 year, you are comparing the figures of only 1 year, you would be doing a vertical analysis. So here we are doing a horizontal analysis. So that's why the answer is going to be option number A. So now let's come to the next question. The technique of studying the operational results and financial position over a series of years is known as. So what you are doing? You are studying your operational results. It means you are studying your profit and loss statement, your income statement, and your financial position. It means your balance sheet over a number of years. Definitely we are going to provide PDF of it, Jeremy, don't worry about it. But we would be really grateful if you join till the end. Just don't read from the PDF, just join this session till the end. Okay, only in last 15 to 20 minutes. Option number D के आंसर मेरे पास आ रहे हैं. This is perfectly fine. So we are trying to see the trend, profit का trend देख रहे हैं. So this is what we are trying to do. We are doing some trend analysis. Okay, trend analysis की इस साल में इतना था, next year में इतना था. Okay, so this is some trend analysis that we are doing. So answer is option number D. चलो जी, next question, super easy. Dash is considered as an ideal current ratio. What is an ideal current ratio? What is an ideal current ratio? Current ratio is your current assets by current liabilities. So current assets ideally should be yes, ideally they should be Vinayak, Anupama, Lokesh, Gokul, Payal. All of you are saying that ideally they should be twice our current liabilities. So your current assets should be twice of current liabilities. तो अगर आपकी current liabilities 1 lakh है, your current assets ideally should be 2 lakh. Okay, तो twice होने चाहिए. So this is the ideal current ratio, 2:1. So that's why the answer is option number B. Now let's come to the next question. Here we have to compute the current ratio. Yes, Rahul is right. Current की 2:1 है, quick की 1:1 है. चलिए, so let's solve it. राहुल इसे solve करता है फटाफट से. मैं अपना solve कर रहा हूँ, अपना कीजिए, no cheating. तो वर्किंग कैपिटल मुझे दिया है 2 लाख का. दिस मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज 2 लाख. करंट एसेट इज रुपीज 6 लाख. सो इट मीन्स 6 लाख माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 लाख. करंट लायबिलिटी बाय सॉल्विंग दिस इट शुड बी 4 लाख. सो करंट एसेट 6 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख. करंट रेशो, इनका रेशो होता है सिंपली तो 6 लाख बाय 4 लाख, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 3:2. नहीं, कितना होगा ये 1.5:1. हाँ, 3:2. अरे बाप रे, आपने तो पहले ही आंसर दे दिए सभी ने. बिल्कुल आंसर सही है जी आप सभी के. नदीम, निधि, सरिता, आप सभी के आंसर एकदम सही आ रहे हैं जी. आंसर इज 1.5:1. Now let's move on to the next question. Dash plus operating profit ratio in percentage terms is equal to 100%.
I think I already discussed this point with you guys in the last session that we took on ratio analysis. At the end, someone asked me this particular point and I discussed it in the class. Okay, so let's suppose your sales is rupees 10 lakh. Your sales is rupees 10 lakh. I'm getting the answer as option number. Let's suppose your sales are rupees 10 lakh. Yeah, Anuradha is perfectly right for this one. Anupama, Vinay, all of you are right. Let's suppose my sale is 10 lakh. Okay, and my operating profit is 2 lakh. Okay, so my operating expenses would be 8 lakh. So if I compute my operating profit ratio, this operating profit ratio is going to be how much? This is going to be 2 lakh by 10 lakh, that is 20%. And if I compute my operating expenses ratio, this is going to be how much? 8 lakh divided by 10 lakh, yani it is going to be 80%. Okay, so 20 plus 80%, this is 100%. So operating profit ratio plus operating expense ratio is 100%, and you guys have answered this one very correctly. All of you are right for this one. सर अब आए ना आसान आसान सवाल. बीच में आप मुश्किल ले आए थे तो हम डर गए थे, तभी तो कहते हैं डर के आगे जीत है. चलो जी, इसमें आपको निकालनी है डेट इक्विटी रेशो. डेट और इक्विटी की रेशो हमें निकालनी है. देखते हैं कि वेदर यू कैन कंप्लीट इट और नॉट. This seems to be a tricky question to me. Total assets are 35 lakh, total debt is 25 lakh, current liability is 8 lakh. So my long-term debt is going to be how much? This is going to be 17 lakh. It should be 17 lakh, na? Let's see if you can solve this one. Let's see if you can solve this one. So my long-term debt is going to be 17 lakh. Okay. And for debt equity ratio, I have to see my long-term debt and my equity. So now I don't know what is going to be my equity. So in my balance sheet, it is mentioned my total assets are 35 lakh. So if assets are 35 lakh, the liabilities are also going to be 35 lakh. Okay. And if out of the total liability side, okay, this is my asset side and this is my liability side, this totals out to 35 lakh, and this would also total out to 35 lakh. Here I have my equity and here I have my debt as well. So if the debt is 25 lakh, including both short term and long term, okay, this is 25 lakh. So my equity is going to be 10 lakh. Okay, for debt equity ratio, we normally prefer long term debt. Okay, so that's why we are only going to consider the long term debt, that is 17 lakh. That is going to be in the numerator, and in the denominator we are going to have 10 lakh. So this is going to be come out to be 1.7:1. So answer is option number C. 1.7 is more appropriate. Debt equity ratio के लिए normally we consider only long term debt. Okay, normally only long term debt is considered, but if the question does not provide any information on short term and long term, then you would consider total debt. Normally we consider long term debt only. Okay, if no information is given, then you can consider total as well. Normally this is how we solve it. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. लॉन्ग टर्म लोन 10 lakh, interest on the loan is 1,25,000. Earning before interest and tax is 5 lakh. What is going to be my interest coverage ratio? Interest coverage ratio. You know what is this interest coverage ratio? It means how much amount we have for covering the interest expense. So for covering the interest expense, we have 5 lakh ka amount. So for covering this 1,25,000 ka interest expense, we have 5 lakh ka amount. It means we have 4 times the amount of interest to cover it. So the coverage ratio should be how much? It should be 4 times. Right, Sarita, Vanshika, Sonia, Shrijit. Shrijit is 4 times keh rahe ho na? So this is right. 4 times. So how this is computed? This is very simple. EBIT divided by your interest. EBIT divided by your interest. So this is 4 times. It was a very easy question. I don't know how you guys got confused. Chalo ji. Next question, we have to compute the inventory turnover ratio from the turnover ratio निकालना है. हाँ, right, Agnik.
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड divided by average stock. We are already given the cost of goods sold 1,50,000. Average stock is how much? Opening stock plus closing stock divided by 2. Now we would have to compute it. We are given closing stock is 60,000 and closing stock का excess over opening stock is 20,000. So opening stock closing stock से 20,000 कम होगा, यानी कि it is going to be 40,000. Okay, so 60 plus 40 का average, this is going to come out to 50,000. So 1,50,000 divided by 50,000, this is going to be 3 times. Agnik, Nikhil, Lokesh, all of you are saying 3 times. And this is perfectly right answer. Very good guys, very good guys. So it's really good to see that you guys have tuned into this session till now. So now let's come to the next question. If the debtors turnover ratio is 6 times and creditors turnover ratio is 4 times, then what is the average collection period in months? What is your average collection period? Average collection period is for debtors or creditors? आप collection किससे करते हैं, debtors से या creditors से? Sir, collections they are made from debtors and not creditors. Debtors से we collect and creditors को we make payment. Okay, so collection period has to be collected from the debtors perspective, so we have to use the debtor turnover ratio. Gokul, Ruturaj, Sarita, ऑप्शन नंबर बी का आंसर दे रहे हैं. लेट्स सी इफ यू आर राइट. सो या दिस मंथ्स में निकालनी है. सो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, दिस इज माय कलेक्शन पीरियड. सो 12 डिवाइडेड बाय 6, दिस इज गोइंग टू बी 2 मंथ्स, यानी कि 2 मंथ्स में मैं अपने डेटर से पैसे कलेक्ट कर लेता हूं. दिस इज गोइंग टू बी 2 मंथ्स. राइट, ऑल ऑफ यू आर राइट. अग्निक, विनय, अंजलि, इंदु, हाँ निधीश, बिल्कुल डेटर्स को देखते हैं. ज्योति, निशा, ऑल ऑफ यू आर राइट. Now let's see if you can calculate return on investment, ROI. ROI आप कंप्यूट करना जानते हैं कि नहीं जानते? ROI, investment पे return. This return on investment is basically computed by the formula. I'll tell you the formula, but you have to compute it. EBIT divided by capital employed. This is the formula, but you guys have to compute it. I'm waiting for your answers. I'm waiting for your answers, guys. So we have to compute EBIT divided by capital employed. EBIT is directly given in the question as 11 lakh. So this is 11 lakh, but what is capital employed? How do you compute this capital employed? So capital employed कैसे निकाल सकते हैं? What is capital employed? Capital employed is basically the debt and equity that you have employed in the business. So debt or equity का total is going to be the capital employed. Okay, so debt or equity का total capital employed होता है, but in this case we are not given the information on the debt and the equity. Information ही नहीं given. So we have an alternative way of computing the capital employed. How we can compute it? तो आप देखिए ये बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया. सो टोटल ऑफ बोथ साइड्स इज 15 लाख. ओके, टोटल ऑफ बोथ साइड्स इज 15 लाख एंड इसके अंदर आपका कैपिटल एम्प्लॉयड 13 लाख बन रहा है. 13 lakh can be computed from another way as well. How we can compute it? Fixed asset plus current asset minus current liability. अगर आप ये करेंगे 10 plus 5 minus 2, ये भी आपका 13 lakh ही आएगा. So there is this another approach of computing the capital employed, and this is the approach that you have to follow for this question. So 75 lakh plus 40 lakh minus 27 lakh. So this is going to be 88 lakh. So 11 lakh by 88 lakh, this is going to be 12.5%, and all of you are answering it very correctly. Vanshika, Lokesh, Anupama, नहीं लोकेश तो क्या, हाँ लोकेश 12.5 ही कह रहे हैं. हाँ बिल्कुल ठीक है जी, 12.5%. या ऑल ऑफ यू आर राइट. सो आई वांटेड यू टू नो कि कैपिटल एम्प्लॉयड को आप कैसे अलग अलग तरीके से कंप्यूट कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन ऑफ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. लास्ट 10 क्वेश्चन गाइस. लेट्स कीप द जोश इन दीज क्वेश्चंस एज वेल. Let's try to complete these. Working capital turnover ratio. So I've already told you, whenever a turnover ratio is asked, in the numerator we have the turnover
and in the denominator we have the working capital. So turnover is directly given in the question 1,50,000, but working capital is not. Working capital is current asset minus current liability. So let's do it. So current asset में आएगा cash, bill receivable, sundry debtors and stock. Add all of these and subtract the sundry creditors, which is a current liability. So let's quickly solve it. 15 plus 25 is 40, plus 20 is 60, minus 30 should be 30. So working capital should be 30,000 according to me. And turnover is 150, so answer should be right. Vinayak, Sonia, Agnik, Nisha. हाँ श्रीजीत 11 क्वेश्चंस हैं. हाँ बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं आप सभी के 5 टाइम्स. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5 टाइम्स. चलो जी फाइनली अब तो 10 रह गए ना श्रीजीत. चलो अब इनको सॉल्व करो फटाफट से. 5 मिनट में 10 सवाल हो जाएंगे. बहुत आसान सवाल है, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. Debt to equity ratio of X Limited is 1:2. Debt to equity ratio is 1:2. Suppose debt is 1 lakh, equity is 2 lakh. Okay. So what is the effect of conversion of debentures into preference shares on this ratio? So debentures we are converting into preference shares. So debentures हमारे क्या हो जाएंगे? Reduce हो जाएंगे और equity हमारी बढ़ जाएगी. So debentures let's suppose हमने 50,000 के convert कर दिए तो 50,000 से कम हो गया और 50,000 नीचे add हो गया. So 1:2 से ये ratio क्या बन गई? 50,000 divided by 2,50,000 1:5 की बन गई. 1:5 की बन गई यानी कि 0.2 बन गई रेशो. पहले 0.5 थी, अब ये 0.2 बन गई यानी कि ये रेशो डिक्रीज हो गई. हाँ बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं. सोनिया, निशा, सरिता, नदीम, वंशिका, ऑल ऑफ यू आर राइट. रॉबिन, ऑल ऑफ यू आर राइट. आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट दिस रेशो वुड डिक्रीज. चलो जी फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे. राइट फटाफट से आ जाओ अगले क्वेश्चन पे. बहुत आसान सवाल है. A firm carries an average inventory of rupees 40,000. Its inventory turnover ratio is 8 times. Inventory turnover ratio is 8 times. It sells goods at a profit of 20% on revenue from operations. That is its sales. You have to find out the profit. मैं अपना सॉल्व करता हूं, अपना कीजिए. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक. सो एवरेज स्टॉक मेरा कितना होता है? एवरेज स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे यहां पे दिया नहीं है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 दिया है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं निकाल लेता हूं. एवरेज स्टॉक तो दिया है ना 40,000. सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गोइंग टू बी 8 into 40,000. सो दिस वुड बी 3,20,000 और 20% ऑफ रेवेन्यू. लेट्स सपोज माय रेवेन्यू इज x. रेवेन्यू इज x. सो माय प्रॉफिट इज गोइंग टू बी 0.2x. ओके सो x minus 2x, x minus 2x, sales minus my profit is going to be my cost of goods sold. That is 3,20,000. So 0.8x is 3,20,000. So it means x का value कितना होगा? X is going to be 4 lakh. So profit is going to be 20% of it, that is 80,000. 80,000 का profit आएगा. किसने आंसर दिया 80,000? Robin has given 80,000. Rahul has given 80,000. Anuradha has given 80,000. नहीं अनुराधा ने तो नहीं दिया, विनय ने दिया. विनय ने आंसर दिया 80,000 का. दिस इज करेक्ट. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट वेरी क्विकली. एग्जामिनेशन में lots and lots of questions are going to be there. So you have to keep your momentum. You have to keep your mind intact till the end of it. Then only you'll be able to solve all of these. चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया है. वेरी इजी क्वेश्चन ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग. हाँ अग्निक बिल्कुल ऐसे भी कर सकते थे. बिल्कुल आप एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, एक्सप्लेनेशन में मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है. चलो लेट्स सॉल्व इट. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश. कैश फ्लो किसमें होने वाला है बताइए. हाँ बिल्कुल राहुल ऐसे भी कर सकते थे. बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते थे. कैश फ्लो स्टेटमेंट में we are concerned with the flow of cash and this flow of cash includes cash and cash equivalent. तो यहाँ पे आपका कैश तो आता ही आता है, but it also includes your bank balance and short-term marketable securities as well. So now I'm getting the answer as option number C from Nadeem, Lokesh, Vinayak, Anjali. Sonia is saying option B. So let's see if this is correct. So now अगर आपने बैंक में डिपॉजिट किया 15,000, so आपका कैश कम हुआ 15,000 से और बैंक बढ़ गया 15,000 से. सो अल्टीमेटली फ्लो ऑफ कैश हुआ कि नहीं हुआ? तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखोगे तो कोई फ्लो नहीं हुआ. आपने कैश बैंक से विड्रॉ किया 12,000 का,
सो अल्टीमेटली अगेन अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का फ्लो देखोगे, देयर इज नो चेंज इन इट. ओके, अगर आपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया, नो कैश इन्वॉल्व्ड. बट इफ यू हैव सोल्ड सम मशीनरी and you have got some amount, then this is going to result in the flow of cash. So that's why option number C is going to be the answer. Okay, let me make it more clear. So let's suppose my cash is rupees 60,000 and my bank is rupees 40,000. Okay, this is the case. So my total cash and cash equivalent is rupees 1 lakh. अब देखते हैं फ्लो ऑफ कैश होगा कि नहीं होगा. सो दिस इज माय टोटल कैश फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट पर्सपेक्टिव. सो अगर मैं 15,000 बैंक में डिपॉजिट कर रहा हूं तो यहां से 15,000 कम हो जाएगा और यहां पे 15,000 ऐड हो जाएगा. तो अगेन टोटल इज गोइंग टू रिमेन सेम. ओके, सो दिस इज हाउ यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. Okay, so answer is option C. Now let's come to the next question. Payment of bonus to employees by an insurance company is which type of activity? तो अगर हमारी इंश्योरेंस कंपनी कोई बोनस पे कर रही है एम्प्लॉइज को, सो एनी अमाउंट विच इज पेड टू द एम्प्लॉइज, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज रिलेटेड टू, किससे जुड़ा हुआ है, ऑपरेशन से, इन्वेस्टमेंट से या फाइनेंसिंग से, किससे जुड़ा हुआ है, फटाफट से बताइए. बस आखिरी के सवाल रह गए हैं. अरे विनीत क्या कह दिया तुमने, एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको हमने कुछ बोनस पे किया, सैलरी और बोनस हुआ ना, सैलरी बोनस एम्प्लॉय को जो देते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे. सो दिस इज रिलेटेड टू योर ऑपरेशंस. हाँ, वंशिका, अनुपमा, निधीश, श्रीजीत, ऑल ऑफ यू आर राइट. ऑपरेटिंग है, दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी. दिस इज रिलेटेड टू द कोर ऑपरेशंस ना, सैलरी आप पे करते हैं एम्प्लॉइज को, दिस इज रिलेटेड टू द कोर ऑपरेशंस. So now let's come to the next question. In case of a financial enterprise, dividend received will be shown under. So now be careful. Financial enterprise है, यानी कि इस एंटिटी का बिजनेस ही है, इंटरेस्ट और डिविडेंड से रोजाना खेलती है ये कंपनी आपकी, इन्वेस्टमेंट्स करती है, लोन्स देती है. सो फॉर दिस कंपनी, फॉर दिस फाइनेंशियल एंटरप्राइज, no Agnik, we have not included these questions here, but yeah, you can refer the previous discussions, you can refer the previous 100 MCQ series that was conducted in 4 parts for these questions. A और B में confusion क्यों है जी इतना? अगर आपकी फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, इट मींस इसका बिजनेस ही है इन्वेस्टमेंट करना. तो अगर आपका बिजनेस ही है टू मेक सम इन्वेस्टमेंट्स एंड इफ यू आर गेटिंग सम रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स व्हिच इज पार्ट ऑफ योर कोर ऑपरेशंस, then any income on those investments is going to be your operating activity. So this dividend is going to be operating activity. So just be clear about कि अगर आपको फाइनेंशियल एंटरप्राइज दिया हुआ है तो you have to be very careful कि इस केस में आपका जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है that is going to be operating activity. नॉन फाइनेंशियल के लिए they are going to be investing or financing activity. Just be careful about it. Okay, just be very careful about it. ये अभी तक चल रहा है? हाँ अभी तक चल रहा है जी. हाँ राहुल, बिल्कुल, डिविडेंड पेड इज ऑलवेज फाइनेंसिंग, ये आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. So X Limited purchased machinery of rupees 2 lakh, he should check of rupees 50,000 and 8% debentures of rupees 1,50,000. बताइए कैश फ्लो कितना है? What is the cash flow in this transaction? जो भी स्मार्ट है वो इसे निकाल लेगा, बाकी लोगों को लगेगा अरे क्या सवाल आ गया, तो बहुत मुश्किल सवाल है. थोड़ा सा स्मार्टली सोचिए. तो मशीनरी 2 लाख का खरीदा, बट अब ये देखिए एक्चुअल में कैश कितना गया. कैश कितना गया देखो, कैश तो 50,000 गया, बाकी तो डिबेंचर्स ही इशू हुए ना, है ना जी. तो क्या होना चाहिए आंसर? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कंसर्न्ड विद द फ्लो ऑफ कैश. Issuing debentures is not flow of cash. Yes. Vinayak, Anupama, Vanshika, Nisha, you have got the point. Lokesh, Nidish, you have got the point. Answer is going to be option number B, 50,000. This is the flow of cash. This is the outflow of cash which has happened. Debenture se pay kiya, this is not outflow of cash. Okay. Chaliye ji. Now let's come to the next question. Cash flow from financing activity निकालना है.
वी हैव टू कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है, डिबेंचर्स ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स एंड डिविडेंड पेड इज आल्सो गिवन इन दिस क्वेश्चन. हाँ प्रांजलि, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश का जो मीनिंग है दैट इज वेरी वाइड. हाँ बी ही तो है आंसर, नीतीश बी ही तो है. हाँ प्रांजलि, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश का मीनिंग इज वेरी वाइड, सो इट इंक्लूड्स योर कैश एंड बैंक. ओके, कैश एंड बैंक दोनों आते हैं उसके अंदर. अरे विनायक ने तो निकाल भी लिया, मैं पीछे रह गया. तो मुझे बताया कि इक्विटी शेयर ओपनिंग में 10 लाख थे, क्लोजिंग में 2 लाख है. सो कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी. आई वुड एज्यूम कि आई हैव इशूड शेयर्स ऑफ 2 लाख. सो दिस इज बेसिकली माय इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ओके, and similarly debentures, they were 1 lakh in the beginning and 2 lakh at the end, so I will assume ki 1 lakh ke debentures they were issued during the year, so this is again my inflow. And I'm given two outflows, interest and dividend, so these are my two outflows. So net कितना करके आएगा जी? Inflows का total है 3 lakh and outflows का total है 62,000. so net flow कितना है? net inflow है हमारे पास 2,38,000 का. अरे बाप रे, आप सभी ने तो इतनी जल्दी आंसर दे दिए. इतनी जल्दी आंसर कैसे दे देते हो आप? चलिए बहुत बढ़िया, मेरा काम आसान हो गया, फटाफट आंसर आ गए. जी बिल्कुल, चलो जी 2,38,000. हाँ हाँ बिल्कुल राहुल. चलो जी इस क्वेश्चन पे आ जाएं. आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालने. वी हैव टू कंप्यूट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल कर बताइए. सो बेसिकली हमें यहां पे दिया है, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको कुछ नॉन ऑपरेटिंग चीजें माइनस करनी पड़ती हैं, एंड देन यू रीच योर नेट प्रॉफिट. ओके, देन यू रीच योर नेट प्रॉफिट. जैसे क्या माइनस करते हो आप माइनस करते हो अपने इंटरेस्ट को. और कौन सी चीजें होती हैं आपकी? कोई लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, उसको आप माइनस करते हो. This is not related to your operations of the enterprise. Okay, so आप इनको यहाँ पे माइनस करते हो तो आप नेट प्रॉफिट पे पहुंचते हो. Actually, this question is from the cash flow statement perspective. I should have been more clear for this one. I should have mentioned from the cash flow statement perspective. Okay, so from the cash flow statement perspective, I would have to solve it. तो मैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन मुझे दिया हुआ है, मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है. ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना है तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? एड बैक करना पड़ेगा. मुझे बेसिकली ये 28,800 गिवन है, एंड आई एम गिवन कि मेरा यहाँ पे जो इंटरेस्ट है इट इज 1,800 एंड दिस लॉस ऑन सेल इज 4,000. तो इनको मुझे ऐड करना पड़ेगा. सो 5,800 मुझे ऐड करना पड़ेगा. अब देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देन डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. So because this is a non-cash expense, while preparing cash flow statement, this is also added back. Okay, this is also added back. So total amount added back, it should be 19,800. So 28 plus 19,800. ऐसी होगा कि नहीं होगा कि मैंने कोई गड़बड़ कर दी यहाँ पे? इतना ही आएगा कि नहीं आएगा? 28,800 है, सॉरी 28,800 प्लस 19,800. हाँ तो कितना बन गया ये आपका 48,600 बन गया. राइट इतना ही बनेगा ना? गड़बड़ तो नहीं हो गई कोई? 28,800 प्लस कितना कर रहे थे हम? 19,800. तो कितना बनेगा जी ये? सॉल्व करो इसको फटाफट से. हाँ 48,600 ही तो बनेगा. ई आंसर क्यों दे रहे हो भाई? फिर भाई ऐसी छोटी छोटी गलतियां मत करो. अब 48,600 होगा जी उसका आंसर. छोटी छोटी गलतियां अब नहीं करनी हमने. अब बड़े हो गए हैं, छोटी गलतियां क्यों करें, बड़ी गलतियां करेंगे. सो नाउ कमिंग ऑन टू द 99th क्वेश्चन. शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ. सिद्धार्थ बहुत फॉर्म में आ चुके हैं. सी इतनी बार लिख दिया सिद्धार्थ ने तो. अरे बाप रे बाप. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना, ये तो पिछले का दे रहे हो लगता है. नदीम, राहुल, विनय, शिवा, लोकेश
फंड फ्लो स्टेटमेंट. सो फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट कैश, एंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द फंड्स व्हिच इज बेसिकली अवर working capital. So while preparing the fund flow statement, first we have to identify what is the change in the working capital, and for this we have to prepare the schedule of changes in working capital. We have to prepare the schedule of changes in working capital. Okay, so that's why the answer is going to be option number B. So ऐसे आप एक schedule बनाते हैं, आप देखते हैं कि working capital मेरा opening में कितना था, closing में कितना है, और इसमें net change कितना आया, net increase decrease कितना आया working capital के अंदर. So this is how the first step of fund flow statement is done. Yes, all of you are right. बिल्कुल अग्निक सेंचुरी मार दी है. 100th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं. Which of the following would not be shown as application of fund while preparing the fund flow statement? तो fund flow statement में एक तरफ क्या आते हैं आपके, एक तरफ आते हैं आपके सोर्सेस और एक तरफ आते हैं जी आपके एप्लीकेशन. फंड कहां से आए और फंड कहां पे अप्लाई हो गए. सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डीलिंग विद व्हाइल प्रिपेयरिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट. बताइए, if we have lost the funds in operation, this is basically going to be an application. If we have redeemed preference shares, again application. If we have repaid a term loan, it is again application of fund. If we have bought back the equity shares, it is again application of fund. So only D remains. Only D remains. Let's see क्या आंसर आते हैं. अगर आप बायबैक करोगे शेयर्स का तो उसमें फंड्स लगेंगे ना आपके. अग्निक, राहुल, अरे क्यों गड़बड़ कर दी आपने लास्ट सवाल में. देखो, अगर आपका ये है सोर्सेज और एप्लीकेशंस. ओके, सोर्सेज और एप्लीकेशन है आपके. अगर आपके फंड आ रहे हैं, फंड कहां से आ सकते हैं? The funds can be coming from your operations or from issuing the share capital, issuing debentures, from raising term loan, from selling the fixed assets, from any other non-operating receipts like dividend or other interest income. Funds कहां पे apply कर सकते हो आप funds apply कर सकते हो maybe in redeeming your shares, debentures, your repayment of loan, repayment of like repayment of buyback of the equity shares, payment of dividend, payment of tax, payment of interest. Here you can apply the funds, and the difference that is going to be adjusted in the working capital. Okay, so अगर आपके sources of funds जो थे they were 80 lakh, okay, and the application of fund it was rupees 90 lakh. So what it means कि आपने working capital में 10 lakh निकाल लिए, आपने apply 90 lakh किया, but you had sources for only 80 lakh. So this means आपने working capital से 10 lakh निकाला अपनी application को पूरा करने के लिए. To meet the application amount you withdraw some amount for the working capital. So this 10 lakh is basically the balancing figure. This is your balancing figure. Okay, this net decrease in working capital is your balancing figure. This is how this fund flow statement is prepared. This net decrease in working capital is shown on the sources side. Okay, Vinayak, एनर्जी डाउन है तो अब रेस्ट कीजिए. वी आर डन विद दिस सेशन एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज नाउ. So thank you guys. This was the entire discussion on Super Marathon series. It was really good tuning in with you guys. I wish you all the best for your examination. I wish I could meet all of you while we are preparing for the next phase of the examination. We are going to have some really good sessions for phase 2 which have been planned out. And I hope to see all of you in those sessions. So thank you guys. This is all for today. I hope you enjoyed the session. You got to learn something new today. अरे बाप रे बाप, वंशिका चलो कोई बात नहीं, कुछ समझा तो सही आपने, कुछ सीखने को मिला, वो बहुत अच्छी बात है. नदीम कह रहे हैं अभी तो स्टार्ट हुए, अभी तो गर्म हुए हैं. मोस्ट वेलकम अनुपमा. फेज 1 में कैसा भी सवाल आ सकता है, डोंट वरी ना, आप तो प्रिपेयर कीजिए. नदीम इज रेडी फॉर अनदर 100 क्वेश्चन. चलो अब फटाफट से 100 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना. मोस्ट वेलकम रोबिन, राहुल, कृष्णा, थैंक यू, शिवा, गोकुल, विनायक, निशा, सोनिया, आदित्य, प्रांजलि, इंदु, निखिल, सौम्या, मानसी, विनायक, मोस्ट वेलकम, मैत्री, मोस्ट वेलकम, अंजलि, जीतू कह रहे हैं रिवीजन हो गया. चलिए बहुत बढ़िया हो गया.
फ्लो आ गया, चलिए बहुत बढ़िया। शिवा कह रहे हैं एप्लीकेशन इज एक्सप्लेनेशन इज सुपर्ब, चलिए रियली गुड, मोस्ट वेलकम सरिता। हाँ बिल्कुल, फेज 1 करके आओ, फिर फेज 2 की अच्छे से तैयारी करेंगे। गोकुल कह रहे हैं काफी सीखा, थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम निधीश। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बी पॉजिटिव। एसटी कह रहे हैं यूर नेट एस्पिरेंट, ओके ऑल द बेस्ट फॉर दैट, रिजल्ट ऑफ नेट इज ऑल्सो कमिंग। मोस्ट वेलकम शालिनी, सबा, विजय, या गुड नाइट, बाय लोकेश, मोस्ट वेलकम नदीम, सौरभ। Nisha is saying teaching style is superb. Thank you, Nisha. It's only because of you guys we are able to maintain the momentum, the temperament till the end. विनीत कह रहे हैं आज मेरा अकाउंट हो गया। नितीश कह रहे हैं मस्त रिवाइज हो गया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ कंपनी एक्ट पे कराएंगे, कंपनी एक्ट वाले सर आपको कराएंगे, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ पढ़ाएंगे। विजय कह रहे हैं आप पेड कोर्स में क्यों नहीं पढ़ा रहे, कोई बात नहीं पढ़ा देंगे आपको, आप चिंता मत कीजिए जी। I took a paid आपका Zoom session है ना paid course पे, तो I took all these Zoom sessions. Okay, so you can join me tomorrow in the paid course. Okay, Vijay. Most welcome, Vineet. Yeah, good night. Anshul is feeling confident. This is really good. Okay, guys. So it's me signing off. All the best to you. Bye. Take care.